પ્રતિક્રમણનો અર્થ શું? આપણે પર્યુષણ દરમિયાન 17 પ્રતિક્રમણ કરવા જોઈએ. કેટલા શૈલેષભાઈ? 17 પ્રતિક્રમણ કરવા જોઈએ. 8 રાઈ પ્રતિક્રમણ, 8 દિવસીય એટલે કે 1 14 ને 1 સંવત્સરીનું, 16 અને 1 પાંચમની સવારનું. ઓછામાં ઓછા 17 પ્રતિક્રમણો કરવા જોઈએ શ્રાવકે વર્ષ દરમિયાન. આમ તો રોજ જ પ્રતિક્રમણ કરવું જોઈએ, પણ જે રોજ પ્રતિક્રમણ કરતું નથી એને 17 પ્રતિક્રમણ કરવા જોઈએ. 17 પ્રતિક્રમણ ન થાય તો આપણે પાછું માની લીધું કે સાંજનું પ્રતિક્રમણ તો કરવું જ જોઈએ. સાંજના પ્રતિક્રમણમાં પણ આપણે વિકલ્પ શોધી કાઢીએ છીએ કે વીકેન્ડ છે, ઘરે થોડું ધ્યાન રાખવાનું છે, ઓફિસે જવાનું છે, જોબ પર જવાનું છે, આ બધા આપણે રસ્તા કાઢીએ છીએ. એમાંથી પણ આપણે ચૂકીએ છીએ. છેવટે 1 પ્રતિક્રમણ ઉપર આવી જઈએ છીએ ને એ 1 પ્રતિક્રમણ એટલે સંવત્સરીનું પ્રતિક્રમણ. પર્યુષણના દિવસો આપણને ખબર છે આવતા વર્ષે પણ પર્યુષણ આવવાનું છે, પણ આજથી આપણે આવતા વર્ષના પર્યુષણનું પ્લાનિંગ કરતા નથી. એટલા માટે આપણને આ 8 પ્રતિક્રમણ કરવાનો પણ સમય મળતો નથી. આપણે જો પહેલેથી પ્લાનિંગ કરીએ, પહેલેથી આયોજન કરીએ તો પ્રતિક્રમણ કરવામાં ક્યારેય પણ મુશ્કેલી પડે નહીં. તો આ એક આપણા જીવનમાં કોને આપણે પ્રાયોરિટી આપીએ છીએ, કોને આપણે મહત્ત્વ આપીએ છીએ? આપણને ધર્મનું મહત્ત્વ છે કે આપણને વ્યવહારનું મહત્ત્વ છે? ખાલી 8 દિવસ પૂરતી જ વાત કરું છું. 8 દિવસમાં આપણને કોનું મહત્ત્વ છે એ જો આપણે પહેલેથી આયોજન કરીએ તો એ સ્પષ્ટ થઈ જાય. પણ આ પ્રતિક્રમણનો અર્થ શું છે એ આપણે વિચારીએ તો પ્રતિક્રમણ એટલે પાપથી પાછા હટવું. પાપથી પાછા હટવાનો અર્થ એ છે કે આપણે પાપને પાપ તરીકે સમજીએ ત્યારે પાપથી પાછા હટાય. પાપને પાપ તરીકે સમજીએ જ નહીં, ભૂલને ભૂલ તરીકે ન સમજીએ, ખોટાને ખોટું ન સમજીએ તો ખોટું છે એવું આપણે ક્યારેય સમજી ન શકીએ અને એ ખોટું છોડી ન શકીએ. જે દિવસે આપણને ખોટું ખોટું છે એવું સમજાય તે દિવસે ખોટું છૂટી જાય છે. એક ભાઈ હતા, એને કાર ખરીદવાની હતી. કાર ખરીદવા માટે કારવાળાની દુકાને જાય છે, એની ઓફિસે જાય છે. બહાર બધી કાર ઊભી છે, બધી ડિસ્પ્લે કરેલી છે, ઘણી બધી કાર છે. એને એક પર્ટિક્યુલર મેકની પર્ટિક્યુલર રંગની કાર જોઈતી હતી. એટલે પેલા એને મેનેજરે કહ્યું કે આ કાર આવા રંગની આ કાર મળતા હજુ બીજો 1 વર્ષ જેટલો સમય લાગી જશે, કેમ કે આ બહુ રેર છે. એટલે પેલો કહે છે કે મારે તો અત્યારે ને અત્યારે કાર જોઈએ છે, હું પૈસા લઈને આવ્યો છું. પણ કે આ શક્ય નથી. પેલો જુવાન હતો, નવો પૈસાદાર બન્યો હતો, પૈસાનું પણ એને ગુમાન હતું. એટલે એ ગુસ્સે થઈ ગયો કે પૈસા ખિસ્સામાં છે અને વસ્તુ ના મળે એ કેવું કહેવાય. ગુસ્સે થઈ ગયો એટલે એણે ખિસ્સામાંથી પૈસા કાઢ્યા અને પૈસા ફેંક્યા ડસ્ટબિનમાં કે આ નકામું જ, આ પૈસા હોવા છતાંય કાર નથી મળતી તો એ પૈસાનો મતલબ શું? એમ કરીને એ ગુસ્સો કરીને નીકળી ગયો. પછી પેલા મેનેજરે જોયું કે આ તો આણે પૈસા બધા ડસ્ટબિનમાં નાખી દીધા છે. એટલે એણે ડસ્ટબિન ખાલી કરીને અંદરથી પૈસા કાઢી લીધા. ગણતરી કરી તો જેટલી એ કારની કિંમત હતી એના કરતાં ડબલ પૈસા હતા. એટલે એણે પેલા માણસને બોલાવ્યું કે આપણે આ સિટીમાં તપાસ કરો કે આવી કાર બીજે ક્યાંય મળે એવી છે. થોડા વધુ પૈસા આપવા પડે તો પણ વધુ પૈસા આપીને આપણે એ કાર અહીંયા લઈ આવો અને આના ઘરે પહોંચાડો. એટલે એના ઘરે પહોંચાડી, ખરીદીને મહેનત કરીને ક્યાંકથી શોધી કાઢીને એ કાર એને એના ઘરે પહોંચાડી. બીજા દિવસે આ દોડતો આવ્યો. જે મેનેજર છે એ દોડતો આવ્યો અને કહે છે કે આ તમે જે પૈસા કાલે ડસ્ટબિનમાં નાખ્યા હતા એ તો બધી નકલી નોટો છે. તો કહે કે નકલી છે એટલે તો ફેંકી શક્યો. નકલી ના હોત તો હું ફેંકી જ ના શકત. તમે સમજી ના શક્યા, તમે નકલીને પકડી લીધી. મને ખબર હતી કે આ નકલી છે. જે દિવસે આપણને ખબર પડે કે આપણી અંદર નકલી ઘણી બધી વસ્તુઓ પડી છે, એ નકલી વસ્તુ નકલી છે એવી સમજાય નહીં તો છૂટે નહીં.
આપણે એને પકડી રાખીએ. પ્રતિક્રમણ એ સમજાવવાની કોશિશ કરે છે કે નકલી શું અને અસલી શું. પણ પ્રતિક્રમણમાં આપણે એટલા બધા ફૂલ પ્રૂફ થઈને બેસીએ છીએ, જેવી રીતે ઈરાક કે અફઘાનિસ્તાનમાં યુદ્ધ કરવા જવાનું હોય અને બુલેટ પ્રૂફ જાકેટ પહેર્યું હોય, ગમે તેવી ગોળીઓ છૂટે તો પણ આપણને વાગે નહીં, એવી રીતે ગમે તેટલા સૂત્રો કાને અથડાય પણ આપણને અસર થાય નહીં. એટલા બધા બુલેટ પ્રૂફ જાકેટ પહેરીને બેસીએ છીએ કે આત્માને જાગૃત કરવા માટેના સૂત્રો છે, આત્મજાગૃતિ માટેનું કાર્ય છે. પણ એ આત્મજાગૃતિનું કાર્ય આપણે એ સમયે જે સમયે કરી રહ્યા છીએ એ સમયે પણ પૂરેપૂરા સમર્પિત થઈને કરી શકતા નથી. એ આપણી સૌથી મોટામાં મોટી નબળાઈ છે. એટલે આવશ્યક નિર્યુક્તિની અંદર પ્રતિક્રમણની વાત કરતાં કરતાં કહું કે પ્રતિક્રમણ એટલે પાપથી, પાપ એટલે ખોટું કામ, પાપ એટલે નકામું કામ, પાપ એટલે છોડી દેવા યોગ્ય કાર્ય. એવા કાર્યો કરવાનો જે દિવસો હતા એ દિવસોમાં આપણે જે ખોટું કરી લીધું છે એનાથી પાછા હટવાનું આ પ્રતિક્રમણ કરતી વખતે કરવાનું છે. આ સામાન્ય અર્થ છે અને આપણે ઘણી બધી વાર આરામથી એ સમજી શક્યા છીએ કે પ્રતિ એટલે પાછા અને ક્રમણ એટલે હટવું, પાછા હટવું. જે આપણે કરવા યોગ્ય કાર્યો હતા તે ન કર્યા અને ન કરવા યોગ્ય કાર્ય કર્યા, એ કાર્યોને ન કરવા યોગ્ય કાર્યોને એવા ન કરવા યોગ્ય જાણી અને ફરી પાછું પોતાનામાં આવવું, તેનું નામ પ્રતિક્રમણ છે. તો પ્રતિક્રમણ કરતી વખતે 18 પાપસ્થાનક આવે છે, 7 લાખ જેવા સૂત્રો આવે છે, જે સૂત્રના અર્થ સમજવા માટેની જરાય મહેનત કરવી પડતી નથી. કે 7 લાખ પૃથ્વીકાય, 7 લાખ હબકાય, કે પહેલે પ્રાણાતિપાત, બીજે મૃષાવાદ, ત્રીજે અદત્તાદાન, આ બધા સરળ શબ્દો છે. એની અંદર 18 પાપસ્થાનક એટલે 18 એવા સ્થાનો બતાવ્યા છે, 18 એવી બાબતો બતાવી છે કે જે બાબતોનું આચરણ કરવાથી પાપનો બંધ પડે છે. એટલે હત્યા કરવી, તો હિંસા કરવાથી આપણને પાપ બંધાય છે, જુઠ્ઠું બોલવાથી પાપ બંધાય છે, ચોરી કરવાથી પાપ બંધાય છે, અબ્રહ્મનું સેવન કરવાથી પાપ બંધાય છે, પરિગ્રહ કરવાથી પાપ બંધાય છે. આવું સરળ વાતો કરી છે. પણ એ સરળ વાતો પણ આપણને સમજાતી નથી, કારણ કે જે વસ્તુ આપણે પકડી છે તે વસ્તુ આપણને ખોટી લાગતી નથી, એટલે છૂટતી નથી. ઘરમાં પડેલી વસ્તુ જ્યાં સુધી આપણને કચરા સ્વરૂપે ન લાગે ત્યાં સુધી એને આપણે ગાર્બેજમાં નાખતા નથી, ત્યાં સુધી સજાવીને મૂકીએ છીએ. જે સમયે આપણને એમ લાગે છે કે હવે આ વસ્તુ નકામી થઈ ગઈ છે, એ સમયે આપણે એને રાખતા પણ નથી, એને ફેંકી દઈએ છીએ. તો આ શું રાખવા જેવું અને શું ન રાખવા જેવું એને સમજવાનું છે. એને સમજવા માટેના દિવસો છે. એ દિવસોની અંદર આ વસ્તુ આપણને સમજાઈ જાય એટલે આપણે છોડવા લાગીએ છીએ. પણ આ જે બાળ સાધુ જેવી ચેષ્ટા કરીએ, આપણે બોલીએ ખરા, આજે આપણે પ્રતિક્રમણ કરતી વખતે અતિચાર બોલીશું, અતિચારની અંદર 12 વ્રતોના અતિચાર આવશે, એમાં પહેલું પ્રાણાતિપાતનો અતિચાર આવશે. ત્યારે જો આપણા મનની અંદર જીવો પ્રત્યેની મૈત્રી હશે તો આપણે વિચાર કરીશું કે આ દેશમાં આવીને મેં કઈ કઈ પ્રકારની હિંસાઓ આચરી છે, અથવા હિંસાઓમાં હું ભાગીદાર થયો છું, અથવા એ હિંસાઓને મેં ખોટી નથી માની. એટલું જો સમજાઈ જાય તો આપણને ખ્યાલ આવે કે કેટલા જીવોની હત્યામાં, કેટલા જીવોના વિનાશમાં હું ભાગીદાર બન્યો છું. અને એ જીવોને જે દુઃખ પહોંચ્યું છે એ દુઃખ મારા નિમિત્તે પહોંચ્યું છે, તો મારે એને ક્ષમા આપવી જોઈએ, એવો ભાવ આવી જાય. પણ જો એ ભાવ ન આવે અને મિચ્છામી દુક્કડમ બોલીએ તો મિચ્છામી દુક્કડમનો અર્થ થાય છે આપણે મૃષાવાદ કરીએ છીએ. શું છે? પહેલી વાત કરી કે મૃષાવાદ કરીએ છીએ, એટલે ખોટું બોલીએ છીએ. આપણી અંદર મિચ્છામી દુક્કડમનો અર્થનો એટલે કે પ્રાણાતિપાત એટલે જીવ હિંસા થઈ છે એનો આપણને બોધ નથી, અને એ બોધ નથી અને પાછું આપણે મિચ્છામી દુક્કડમ બોલીએ છીએ, તો એનો અર્થ શું સમજવાનો? એનો અર્થ એટલો જ સમજવાનો કે આપણે વ્યવહારથી મિચ્છામી દુક્કડમ બોલી રહ્યા છીએ.
કમસે કમ કે બીજું કશું પણ ના સમજાય તો એટલું તો સમજી શકીએ આપણે કે મારે કારણે આ જગતની અંદર અનેક જીવોનો ભોગ લેવાય છે, અનેક જીવોનો, સૂક્ષ્મ જીવોનો, સ્થૂળ જીવોનો. આ જગતની અંદર અપકાયના જીવો ન હોત, એટલે પાણી ન હોત તો મારું જીવન ચાલત ખરું. આ જગતની અંદર વનસ્પતિ ન હોત તો મારું જીવન ચાલત ખરું. આ જગતની અંદર અનાજ ન હોત તો મારું જીવન ચાલત ખરું. આ બધાનો ઉપકાર છે ને મારા જીવનને ટકાવી રાખવા મેં રોજે રોજ આ લોકોનો ઉપયોગ કર્યો છે. તો એની હત્યામાં પણ હું નિમિત્ત છું. એમણે મારા ઉપર ઉપકાર કર્યો છે, પણ હું તો હત્યા કરું જ છું. પણ એમાં પણ હું ધ્યાન રાખતો નથી. ઘણી બધી વાર નકામી વસ્તુઓ, જરૂર કરતાં અનેક વસ્તુઓ, જરૂર છે થોડીક અને અનેક વસ્તુનું હું ઉપયોગ કરીને વેડફી નાખું છું. આ ભાવ જ્યારે આવે ત્યારે જીવ હિંસા કરી છે એવો ખ્યાલ આવે. અને એવો ખ્યાલ આવે ત્યારે ભલે બીજું બધું સૂક્ષ્મ જ્ઞાન આપણને ન હોય, પણ એટલું તો જ્ઞાન હોય કે ભાઈ આવું જો થયું હોય, મારા જીવે થયું હોય નહીં પણ કર્યું છે આ જીવે, તો હું ક્ષમા માગું. તો સાચું મિચ્છામી દુક્કડમ થાય. અને જો તમે એમનેમ જ મિચ્છામી દુક્કડમ કરો છો તો એ મિથ્યા છે. મિચ્છામી દુક્કડમ એટલે મૃષાવાદનો દોષ લાગે છે. અને બીજું કે જો તમે મિચ્છામી દુક્કડમ દઈને એના એ જ ભાવથી ફરી પાછા ક્રિયા કરવા લાગો છો તો એ મિચ્છામી દુક્કડમ એ માયા પણ થઈ જાય છે. એટલે પ્રતિક્રમણની અંદર જો તમે સજાગતા ન રાખો તો બે દોષ લાગે છે. એક માયાવાદનો અને બીજો મૃષાવાદનો. માયા અને મૃષા કરીએ છીએ આપણે, જ્યારે જે ક્રિયા કરીએ છીએ તે ક્રિયા કરતી વખતે આપણા જીવનની અંદર બહુ જ સ્પષ્ટતા હોવી જોઈએ કે હું આ ક્રિયા કરી રહ્યો છું. એ ક્રિયાનું મારે પૂરેપૂરું જાગૃતિપૂર્વક અનુસરણ કરવું જોઈએ. એકવાર ગૌતમ સ્વામી ગોચરીએ ગયા છે. ગોચરીએ નીકળ્યા છે ને ગોચરી માટે આનંદ શ્રાવકના ઘરે જઈ ચડ્યા છે. આનંદ એ પરમાત્મા મહાવીરનો પ્રથમ શ્રાવક છે. જેવી રીતે ગૌતમ સ્વામી એ પહેલા સાધુ છે, પહેલા ગણધર છે, તેવી રીતે ભગવાન મહાવીરના જે શ્રાવકો હતા તેમાંનો સૌથી પહેલો શ્રાવક એ આનંદ. એનું નામ આનંદ છે, આનંદ શ્રાવક. આનંદ શ્રાવકે સંથારો લીધો છે. એટલે હવે એણે નક્કી કરી લીધું છે કે જીવનના અંત સુધી હું બીજા કોઈ કાર્યો કરીશ નહીં. હું મારા દેહની પણ દરકાર કરીશ નહીં. સંથારો લઈ લીધો છે. સંથારો લીધો છે અને એ સંથારો લીધો એટલે એને એક અવધિ જ્ઞાન નામનું ત્રીજું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું છે. મતિ જ્ઞાન, શ્રુત જ્ઞાન, પછીનું અવધિ જ્ઞાન છે. ચોથું મનઃપર્યવ જ્ઞાન છે અને પાંચમું કેવળ જ્ઞાન છે. ત્રીજું અવધિ જ્ઞાન, એ જ્ઞાન એટલે ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ અને વર્તમાન કાળનું જ્ઞાન. એ જ્ઞાન થયું. બધા લોકો આનંદ શ્રાવકને વંદન કરવા આવે છે, આનંદ શ્રાવકને પગે લાગવા આવે છે. એની આ જે સાધના છે એ સાધનાને નમસ્કાર કરવા આવે છે. ગૌતમ સ્વામી પણ ત્યાં પહોંચ્યા છે. ગૌતમ સ્વામીને કહે છે કે મને અવધિ જ્ઞાન થયું છે. એટલે ગૌતમ સ્વામી એને પૂછે છે કે અવધિ જ્ઞાનમાં તમે કેટલું જુઓ છો? તો કહે છે કે હું આટલા પ્રદેશ સુધીનું હું જોઈ શકું છું. એટલે ગૌતમ સ્વામી કહે છે કે શ્રાવકને આટલું વિશાળ જ્ઞાન ક્યારેય થાય નહીં. શું કહે છે? આટલું વિશાળ જ્ઞાન થાય નહીં. આનંદ શ્રાવક કહે છે કે હું જોઈ રહ્યો છું. એટલે ગૌતમ સ્વામી એમ કહે છે કે તમે મિથ્યાવાદી છો. શ્રાવકને આટલું જ્ઞાન ન થાય. આટલું કોન્વર્સેશન થયું છે, આટલી વાતચીત થઈ છે, આટલો સંવાદ થયો છે. ગૌતમ સ્વામી ત્યાંથી ગોચરી લઈને પાછા ભગવાન પાસે આવે છે અને ભગવાનને પહેલો પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભગવાન, આજે આનંદ શ્રાવકના ઘરે હું ગોચરીએ ગયો હતો ત્યારે મારે આ બાબતે આટલી વાતચીત થઈ છે અને મારો પ્રશ્ન એ છે કે શું શ્રાવકને આટલું વિશાળ જ્ઞાન થઈ શકે ખરું? ભગવાન કહે છે કે હા, થાય. ગૌતમ સ્વામી ગોચરી કર્યા વગર, એટલે ગોચરી લઈને આવ્યા છે, ગોચરી વાપરવાની બાકી છે,
એ વાપર્યા વગર સીધા આનંદ શ્રાવકના ઘરે ગયા અને આનંદ શ્રાવકને કહે છે કે મિચ્છામિ દુક્કડમ, મેં તમારા જ્ઞાનની આશા જ ના કરી. શું મેં તમારા જ્ઞાનની આશા જ ના કરી? એક બાજુ એક ગણધર છે અને બીજી બાજુ એક શ્રાવક છે. ગણધર હોવા છતાં એમણે પોતાના ગણધર પદનું અભિમાન કર્યું નહીં. પોતે 14 પૂર્વધર છે એનું પણ એમણે અહંકાર ન કર્યો. એમને એવું પણ ન માન્યું કે હું ભગવાન મહાવીરનો પહેલો સાધુ છું, સાધુઓમાં પ્રમુખ છું. અને આમાં તો શું મોટી વાત થઈ ગઈ? એમણે કહ્યું તો માની લેવું જોઈતું. તો ભગવાનને એના ઉપર મોર મારી છે હશે એમ માનીને એ બેઠા ન રહ્યા. પણ એમને થયું કે આ મારાથી એક આશાતના થઈ ગઈ, જ્ઞાનની આશાતના થઈ ગઈ. એ જ્ઞાનની આશાતના દ્વારા જ્ઞાનીની આશાતના થઈ. એટલે તરત ત્યાં પહોંચે છે. પહોંચીને એને મિચ્છામિ દુક્કડમ કહે છે. આ છે ક્ષમાપનાનો ભાવ કે ક્ષમાપનામાં નાનો કે મોટો એવો કોઈ ભેદ નથી. ક્ષમાપનામાં સામેવાળો પાત્ર નાનો છે કે મોટો છે, જ્ઞાની છે કે અજ્ઞાની છે, સ્ત્રી છે કે પુરુષ છે, પદ ઉપર છે કે પદ ઉપર નથી, એવો કોઈ ભેદ નથી. આપણને અહંકાર નડતો હોય છે. અહંકાર નડે છે એટલે આપણે એ જે માફી માગવી જોઈએ એ માફી માગવા માટે તૈયાર થતા નથી અને સાચા અર્થમાં માફી માગતા નથી. મિચ્છામિ દુક્કડમ કહેવા માટે નમ્રતાની જરૂર પડે. એટલે આપણે આજકાલ જે મિચ્છામિ દુક્કડમ કહીએ છીએ એ ખાલી છટકવાની એક બારી છે એવી રીતે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. મિચ્છામિ દુક્કડમ કહેતી વખતે આપણા મનની અંદર નમ્રતા આવી જોવી જોઈએ. આપણા મનની અંદર એ ભાવ ઉત્પન્ન થવો જોઈએ કે મારી ભૂલ થઈ છે અને એ ભૂલની હું ક્ષમા માગું છું. અથવા સામેવાળાને મારા વચનથી ઠેસ પહોંચી છે, એના હૈયાને જે ઠેસ પહોંચી છે, એના મનને જે દુઃખ પહોંચ્યું છે, એ દુઃખ દૂર કરવા માટે હું મિચ્છામિ દુક્કડમ કહું છું. તો એ મિચ્છામિ દુક્કડમ સાચું મિચ્છામિ દુક્કડમ થાય છે. એટલે કલ્પસૂત્રની અંદર છેલ્લે કહું કે જો ઉવસમયી તસ્સ હોય આરાહણા, જો ન ઉવસમયી તસ્સ ન હોય આરાહણા. આરાધક કોને કહેવાય? તો કહે છે કે જે ક્ષમા કરે છે તે આરાધક છે, જે ક્ષમા નથી કરતો તે આરાધક નથી. આરાધના કરવા છતાં પણ આરાધક માટે, એટલે આરાધના એટલે પૂજા કરવી, પ્રતિક્રમણ કરવું, સામાયિક કરવી, જાપ કરવો, સ્વાધ્યાય કરવો, આ બધા આરાધનાના પ્રકારો છે. આરાધના કરે તેને આરાધક કહેવાય. પણ એ આરાધકનું પદ ક્યારે પ્રાપ્ત થાય છે? જે ક્ષમા કરે છે તે, જે પોતાના અંદર રહેલા કષાયોનું ઉપશમન કરે છે તેને આરાધકનું પદ મળે છે. બધાને આરાધકનું પદ મળતું નથી. તો અને જે કષાય સહિતની આરાધના કરે છે તે આરાધક નથી પણ વિરાધક છે. તે પોતાના કષાયની વૃદ્ધિ કરે છે. એટલે ક્ષમાપના કોની કરવાની? તો કહે છે કે ક્ષમાપના કષાયોની કરવાની છે. અંદર પડેલા જે કષાયો છે, અહંકાર પડ્યો છે, ક્રોધ પડ્યો છે, મોહ પડ્યો છે, માયા પડી છે, લોભ પડ્યો છે, કામ પડ્યો છે, જુગુપ્સા પડી છે, આ બધાની આપણે ક્ષમા કરવાની છે. આ બધાને યાદ કરીને આપણે ક્ષમા કરવાની છે. તો ક્ષમા માટેનું કહ્યું છે ઉવસમયી, ઉપશમ કરવું એટલે એને શાંત કરી દેવા, આપણી અંદર પડેલા કષાયોને શાંત કરવા. પરમાત્મા મહાવીરના આપણે ઉપાસક છીએ. એમના જીવનની એક એક ઘટના આપણને ક્ષમા, મૈત્રી, કરુણા, માધ્યસ્થ ભાવનો ઉપદેશ આપે છે. આપણે બીજું કશું જ ન કરીએ પણ પરમાત્માના જીવનની એક એક ઘટનાને યાદ કરીને એની પાછળ રહેલા ઉપદેશને આપણે વિચારીએ તો પણ આપણો આ જન્મારો, આ મનુષ્ય જન્મ સફળ થઈ જાય. ચંડ કૌશિકનું દ્રષ્ટાંત અત્યંત પ્રચલિત છે, અત્યંત પ્રસિદ્ધ છે. ક્ષમાનું સર્વશ્રેષ્ઠ દ્રષ્ટાંત છે. પરમાત્માને ડંખ દીધો છે, અકારણ ડંખ દીધો છે, કોઈ કારણ નથી. પરમાત્મા સામે ચાલીને ત્યાં ગયા છે. ચંડ કૌશિક ડંખ દેશે એ ખબર છે. ચંડ કૌશિક ડંખ દે છે અને પગમાંથી દૂધની ધારા વહે છે. પણ પરમાત્મા શું બોલે છે?
પરમાત્મા એટલું જ બોલે છે કે બુજ બુજ ચંડ કૌશિક, શાંત થા, શાંત થા ચંડ. આ ક્ષમા છે, આ ખરી ક્ષમા છે કે જે ક્ષમાની અંદર સામેવાળા જીવની સાથે મૈત્રી છે, સામેના જીવ પ્રત્યે કરુણા છે અને પોતાના જીવની જાગૃતિ છે, પોતે સ્વયં જાગૃત છે, અપ્રમાદ અવસ્થા છે, એ જાણે છે કે મારી આ ભૂલ થઈ છે અને નમ્રતાપૂર્વક ક્ષમા આપે. અને કોઈક વાર સામેવાળો ભૂલ કરે અને પોતાની ભૂલ ન હોય તો પણ સામેવાળાની ભૂલને ક્ષમા માફ કરી દે. અને એવી ક્ષમા એ સાચી ક્ષમા છે. ચંડ કૌશિકને આટલું જ કહ્યું છે કે બુજ બુજ, બીજો કશો ઉપદેશ નથી આપ્યો. આ બે શબ્દો બોલાયા છે અને એ બે શબ્દો બોલાયા છે એમાંથી એ ત્રિયંચનો જીવ જાગૃત થઈ જાય છે અને એને જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન થાય છે, પૂર્વભાવનું જ્ઞાન થાય છે. જે જીવની આંખમાં વિષ આવી ગયું હતું, આંખમાં ઝેર હતું, જોતા જ સામેવાળાને પીડા ઉત્પન્ન થાય એટલી બધી એની આંખોમાં ઝેર હતું. ઘણા બધા લોકો આપણને જોઈએ છીએ કે જેની આંખોમાં અમી હોય અને કેટલાકની આંખોમાં ઝેર હોય. એને બધું ખોટું જ દેખાય, ખોટું જ કરે, ખોટું જ વિચારે કે આપણે કહીએ કે એની આંખમાં ઝેર છે, એનાથી દૂર રહેજો. કેટલાકની આંખમાં અમી હોય છે, એને આપણે કહીએ કે એને જોઈએ ને, એની આંખોને જોઈએ ને આનંદ થઈ જાય, એને મળીએ ને આનંદ થઈ જાય. એની આંખો જોઈએ ને આપણને એમ થાય કે કેટલું બધું એનામાં ભાવ છે, ભક્તિ છે, કરુણા છે, મૈત્રી છે. તો આ ચંડ કૌશિક એવા કર્મો કરીને એટલો બધો નીચે પડ્યો છે કે એની આંખમાં ઝેર આવી ગયું છે. એ જીવ કે જે સ્વયં તિર્યંચ અવસ્થાની અંદર પહોંચ્યો છે, જે સ્વયં બીજાને પીડા આપી રહ્યો છે અને બીજાને પીડા આપવી એ એનો ખોરાક બની ગયો છે, એવા જીવને જ્યારે પરમાત્માના આ બે શબ્દો સંભળાયા છે, કાને પડ્યા છે, ત્યારે એને થાય છે કે મારે જાગી જવું જોઈએ. અને એ વિચાર કરે છે કે હું શું કરું. મારી છાપ એવી છે કે આ જંગલની અંદર ચંડ કૌશિક નામનો દ્રષ્ટિવિદ સર્પ છે. દ્રષ્ટિ એટલે આંખ, અને આંખોમાં રહેલા ઝેરથી એ બીજું કશું જ ન કરે, ફૂફાડા પણ ન મારે, તો પણ એની નજર પડતા જ આપણને કંપારી છૂટવા માંડે. એટલે કે મારી તો છાપ જ એવી છે, મારું આબરૂ એવી છે. ઘણા લોકો હોય એના માટે કેવી આબરૂ બંધાઈ ગઈ હોય કે ન આવે સેન્ટરમાં તો બધા ખુશ થાય. શું થાય? ન આવે તો મજા આવે કે આ આવશે તો પાછું મુશ્કેલી થશે. કારણ કે એનો વ્યવહાર જ એવો થઈ જાય. આ ચંડ કૌશિક એવું વિચાર કરે છે કે આ જંગલમાં હું છું અને લોકો મને એવું માનશે. તો એણે શું કર્યું કે એણે વિચાર્યું કે મારા માટે લોકો આવું વિચારે એના બદલે હું દરમાં મોઢું રાખું અને શરીર બહાર રાખું, એટલે લોકોને વિશ્વાસ બેસે કે હવે હું કોઈને ડંખ દેવાનો નથી. એટલે મોઢું એણે દરમાં રાખ્યું ને શરીર બહાર રાખ્યું. આવું કર્યું એટલે એક મોટી મુશ્કેલી સર્જાઈ કે લોકો આવીને એની પૂજા કરવા લાગ્યા કે હવે તો આ ચંડ કૌશિક ભગવાન અહીંયાથી પસાર થયા એટલે ચંડ કૌશિક શાંત થઈ ગયો છે. અને શાંત થઈ ગયો એટલે પૂજનીય બની ગયો છે, એની પૂજા કરવી જોઈએ. હવે હવે એ સર્પ નથી રહ્યો, એ તો નાગ દેવતા બની ગયા છે. એટલે લોકો એને દૂધ ચડાવવા માંડ્યા, એને ફૂલ ચડાવવા માંડ્યા, એને નૈવેદ્ય ધરાવવા માંડ્યા, આ બધું કરવા માંડ્યા. એટલે કીડીઓ આવી. એટલે જે બહુ જ બધા નિયમોનું ઓબ્ઝર્વ કરે છે એ એવા બિસ્કિટો ખાતા નથી, કેમ કે એના ઉપર અક્ષરો છે. જે અક્ષરોવાળા આહારના પદાર્થો હોય એને એ ઉપયોગમાં લેતા નથી, અથવા અક્ષરો મિટાવી દે પછી ખાય. પછી આવે છે દર્શનાચાર. દર્શનાચાર એટલે દેરાસરની અંદર જે આપણે પૂજા વગેરે કરીએ છીએ તો એની જે પૂજા કરતી વખતે પરમાત્માની સમક્ષ આપણે જઈએ ત્યારે કે પરમાત્માનું રિસ્પેક્ટ રાખવાનું છે, પરમાત્માની પૂરેપૂરી ભક્તિ કરવાની છે, પરમાત્માનું બહુમાન કરવાનું છે. અને દેરાસરમાં જઈને જો આપણે પરમાત્માનું બહુમાન ન કરીએ, પરમાત્માની ભક્તિ ન કરીએ અને વાતો કરીએ, પરમાત્માની ભક્તિ કરવાના બદલે બીજી બધી બાબતો કરીએ તો એ આશાતના છે.
આપણે પ્રેસિડેન્ટને મળવા ગયા હોઈએ અને એ સમયે આપણે પ્રેસિડેન્ટની સાથે વાતો કરવાને બદલે અથવા એના રૂલ્સને ફોલો કરવાના બદલે આપણા મિત્રો સાથે ત્યાં વાતો કરીએ તો શું થાય? તો ગઈકાલે આપણે જોયું હતું કે આપણા પરમાત્મા તો દેવાધિદેવ છે અને એ દેવાધિદેવની પાસે જઈએ ત્યારે કેટલી બધી આપણી નમ્રતા, ભક્તિ, સમર્પણ ભાવ હોવો જોઈએ. અને એ ન હોય તો આશાતના થાય છે, દેવની આશાતના થાય છે. એ દેવની આશાતનાનો દોષ લાગે છે. એના ઉપર આખું કે દેવને સમજવા માટે આખું શાસ્ત્ર રચી કાઢ્યું. હરિભદ્ર સુરી મહારાજે એક આખો ગ્રંથ લખ્યો લલિત વિસ્તરા નામનો, અને એની અંદર એક કહું કે ધર્મમ પ્રતિ મૂળભૂતા વંદના. આખા શાસ્ત્રનો એક જ વાક્યમાં સાર કહી દીધો અને આખા ધર્મનો સાર કહી દીધો કે ધર્મમ પ્રતિ મૂળભૂતા વંદના. જો ધર્મનું કોઈ મૂળ હોય તો તે વંદના એટલે નમ્રતા છે, નમસ્કાર ભાવ છે. તમે દેરાસરમાં આવો અને ભગવાનના નમસ્કાર કરવાને બદલે, એટલે તમને તરસ લાગી હોય ને તળાવે જાઓ ને તળાવે ગયા પછી પાણી પીવાને બદલે વાતો કરવામાં લાગી જાઓ તો તરસ તો छिपाવાની નથી, તરસ તો વધુ ઘેરી બનવાની છે. પણ વાતો કરવાથી આપણે અવસર ચૂકી જઈએ છીએ. એવી જ વાત છે કે પરમાત્મા પાસે આપણે ભક્તિ કરવા આવ્યા છીએ. પરમાત્મા પાસે આપણે જે કંઈ સેન્ટર ઘણું મોટું છે, આપણે એ ભાગ સિવાયના ભાગમાં વાતો પણ કરી શકીએ છીએ. ત્યાં કોઈ કશું કહેવાનું પણ નથી, ત્યાં કોઈ આપણને ના પણ પાડવા નથી આવવાનું, અને ત્યાં પરમાત્માની આશાતના પણ નથી થવાની. પણ આપણને એવો સ્વભાવ પડી ગયો છે કે દેરાસરમાં જ વાતો કરવાનું મન થાય છે, બહાર નીકળતા પાછી વાતો બંધ થઈ જાય છે. આ સ્વભાવ બદલવાની જરૂર છે કે ધર્મમ પ્રતિ મૂળભૂતા વંદના. ધર્મને પ્રતિ મૂળભૂત કોઈ તત્વ હોય તો તે વંદના છે. અને એ પરમાત્માની સમક્ષ જઈએ છીએ ત્યારે બરાબર યાદ રાખવાનું છે કે કોઈ આશાતના, તો ખાલી દેરાસરના સામાન્ય નિયમોની વાત કરી, ત્યાર પછી પ્રક્ષાલ છે, સ્તુતિ છે, સ્તવન છે, ચૈત્યવંદન છે, એ બધાની પણ ધ્યાનપૂર્વક ભાવપૂર્વક સ્તુતિ કરવાની છે. પણ કહે છે કે આ બધું હોવા છતાંય આપણે તો ભૂલ કરી જ બેસીએ છીએ. તો એ ભૂલ કરી એ અતિચાર થયો, અને એ અતિચાર દોષોની ક્ષમા માગવાની છે. સમ્યક્ત્વના દોષો છે, વીર્યાચારના દોષો છે, પછી 12 વ્રતોના દોષો છે, પછી શિક્ષાવ્રત છે. આ બધા જે તપના દોષો છે, એ બધા જે દોષો છે એ અતિચાર દોષો છે. એ અતિચાર દોષોની ક્ષમા માગવાની છે અને આ સંવત્સરી પર્વમાં એની ક્ષમા કરવાની છે. અને ત્રીજું, પાપોનું પ્રતિક્રમણ કરવાનું છે. આટલું કર્યા પછી પણ ઘણી બધી અંદર ચાલતી બાબતો છે, તે બાબતોનું પ્રતિક્રમણ કરવાનું છે. એ પ્રતિક્રમણ એટલે આ સંવત્સરી પ્રતિક્રમણ છે. સંવત્સરી પ્રતિક્રમણમાં આપણે પ્રતિક્રમણ નથી કરી શકતા અથવા પાપથી પાછા નથી હટી શકતા. તેનું કારણ છે આપણી અંદર અહંકાર પડેલો છે. અહંકાર છે એટલે આપણા મનની અંદર જે ભાવો ઉત્પન્ન થાય છે એ ભાવ છે કે હું સારો છું, અને હું સારો છું ત્યાં સુધી સાચું, પણ બીજો ખરાબ છે. આ એક અહંકારનું સ્વરૂપ છે કે હું સારો છું અને બીજો ખરાબ છે, એવો ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે આપણે મિચ્છામી દુક્કડમ કરીએ છીએ, તે સાચું મિચ્છામી દુક્કડમ થતું નથી. બીજી જે વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે તે છે હું કહું તે સાચું. હું કહું એટલે સાચું. બધાએ આપણને કહ્યું હોય કે તમે બીજા બધા કરતાં વધુ જાણો છો, એટલે આપણને અહંકાર આવી જાય. અને અહંકાર આવે એટલે આપણે શું કહીએ? હું કહું છું ને, તમને ખબર છે? તમને ખબર નથી ને, બસ તમારે ચૂપ રહેવાનું, મેં કહ્યું એટલે માની લેવાનું. આ જે અહંકાર આવ્યો એ અહંકાર મારનારો છે. અને ત્રીજો જે અહંકાર છે, હું મોટો છું, અને હું મોટો છું એવો અહંકાર આવ્યો એટલે આપણે એમ અધિકાર જમાવવા માગીએ છીએ કે મોટો છું ને તમે માનતા નથી. ઘણીવાર આપણે બાળકોને કહીએ, ઘણીવાર પત્નીને કહીએ, ઘણીવાર આપણે આપણાથી નાના ભાઈઓને કહીએ, ઘણીવાર આપણે આપણી હાથ નીચે કામ કરતા માણસોને કહીએ. પણ આપણે જેમ આગળ જોયું તેમ કે દોષ જે છે એ દોષ નાનો પણ કરે અને મોટો પણ કરે.
પણ એ દોષમાં જો જાગૃત રહે તો તરત જ જાગી જવાય અને મિચ્છામી દુક્કડમ કહી શકીએ છે. કષાયો છે ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ છે. ક્રોધ છે એ આપણે એના વિશે ઘણું બધું જાણીએ છીએ, સમજીએ છીએ કે ખરાબ છે. ક્રોધે ક્રોડ પુરવતણું સંયમ ફળ જાય, કડવા ફળ છે ક્રોધના જ્ઞાની એમ બોલે. આ બધું જાણીએ છીએ, પણ ક્રોધ હટતો નથી. માન, અહંકાર, રાવણે માન કર્યું, હારી ગયો. દુર્યોધને માન કર્યું, અહંકાર કર્યો, બધું લૂંટાઈ ગયું. કેટલું બધું લૂંટાયું. જ્યારે છે યુદ્ધ થતાં પહેલાં બધાએ રોક્યા છે કે ભાઈ યુદ્ધ ના કરો. અહંકાર આવી ગયો છે કે ના, અમે એને આપીએ શું કામ, અમારે કશું આપવું નથી. છેવટે કૃષ્ણ પોતે સ્વયં કૌરવો પાસે જાય છે, કૌરવોને સમજાવવા માટે. યુધિષ્ઠિર ગયા છે સમજાવવા માટે ભાઈઓને, ભાઈઓ સમજ્યા નથી. કૃષ્ણ જાય છે. કૃષ્ણ જ્યારે જવાના હતા એની સમાચાર મળ્યા છે કૌરવોને, એટલે ખુશ થઈ જાય છે કે આજે તો કૃષ્ણ અમારે ત્યાં આવે છે, એમને સોનાની થાળીમાં જમાડીશું, સુંદર મજાનો બાજોટ મૂકીશું, સરસ મજાની એમની આગતા સ્વાગતા કરીશું, સરસ ભોજન બનાવીશું અને એટલા પાણી કરી દઈશું કે એ આપણને સમજાવવા આવે છે એના બદલે આપણી વાત એ માની જશે. એક પ્રકારની લાંચ કહેવાય. કૌરવોએ આ આખો તકતો ગોઠવી દીધો છે. વિદુર આવીને કહે છે કે ભાઈઓ થોડી કંઈક વાત સમજો. આ કૃષ્ણ જે આવી રહ્યા છે એ બસ ખાલી તમને સમજાવવા આવી રહ્યા છે. તમે આ બધી તૈયારી કરી રહ્યા છો, એની એને કોઈ અપેક્ષા નથી. એમાંથી એ કશું ગ્રહણ નહીં કરે. એ માત્ર એક વસ્તુ ગ્રહણ કરશે અને એ તમારો ભાવ. એ સિવાયની બધી વસ્તુઓ એમના માટે નકામી છે. કૃષ્ણ આવે છે, કશું જ ગ્રહણ કરતા નથી. ઘણી બધી એમને સ્વાગતની તૈયારી કરી છે, ઘણી બધી રીતે સ્વાગત કરે છે. કૃષ્ણ કહે છે કે મને આમાંનું કશું જ ન ખપે, હું વિષ્ટિ કરવા એટલે ચર્ચા કરવા આવ્યો છું. અને એમને સમજાવે છે. ત્યારે કૌરવો કહે છે કે અમને યુદ્ધ સિવાય કશું જ ખપતું નથી. એમને જોઈતું હોય તો અમારી પાસેથી લડીને જીતીને લઈ જાય. કૌરવો અભિમાનમાં છે, અહંકારમાં છે કે અમને જીતી શકે નહીં. જગતના જે શ્રેષ્ઠ યોદ્ધાઓ છે તે અમારી પાસે છે. અહંકાર શું કરે છે એ જોવાનું છે. કૃષ્ણ જેવો કૃષ્ણ આવીને સમજાવે છે. થોડી વારમાં પૂરો કરીએ છીએ. કૃષ્ણ જેવો કૃષ્ણ સમજાવે છે કૌરવોને કે સમજો, તમે યુદ્ધ કરવા જેવું નથી. યુદ્ધ ભલે ગમે તેવું હોય, તમે જીતશો તો પણ હારેલા જ છો. તમે હારશો તો હારેલા છો, જીતશો તો પણ હારેલા છો. બહુ સરસ એક ચિંતકે કહ્યું છે કે માટી અને પાણીનું યુદ્ધ થાય, માટી અને પાણી લડે, બે વસ્તુ છે, એક બાજુ માટી છે ને એક બાજુ પાણી છે, એ બંને વચ્ચે યુદ્ધ થાય તો કદાચ માટીને બદલે પાણી જીતી જાય તો પણ પાણીને મેલા તો થવું જ પડે. કેમ કે એણે જ્યારે માટી જોડે યુદ્ધ કર્યું એટલે એની સ્વચ્છતા ગુમાવી દીધી. આ જગતનો એક ક્રમ છે કે તમે ક્રોધ કરો અને ક્રોધ કર્યા પછી બીજું કશું ન કરો તો પણ તમે તમારા આત્માને તો મલિન કરો જ છો. આ કૃષ્ણ કૌરવોને સમજાવે છે કે યુદ્ધ કરવા જેવું નથી. એટલે પેલા દુર્યોધન કહે છે કે જો એને રાજ્ય જોતું હોય તો અમારી જોડેથી લડી જીતીને લઈ જાય, બાકી અમે 100ની અણી ઉપર 100ના અગ્રભાગ જેટલો ભાગ પણ આપવા તૈયાર નથી. ન આપ્યો અને યુદ્ધ થયું ત્યારે એક બાજુ 11 અક્ષૌહિણી સેના છે, એટલે 11 એની પાસે વધુ છે અને પાંડવો પાસે 7 અક્ષૌહિણી સેના છે. પાંડવો કરતાં સૈન્યનું બળ, શસ્ત્રોનું બળ અને બળવાનોનું બળ કૌરવો પાસે વધુ હતું. યુદ્ધમાં જીતવાની કોઈ સંભાવના હતી નહીં. કોને? પાંડવોને. યુદ્ધ થયું, યુદ્ધમાં કૌરવો હાર્યા. કૌરવો હાર્યા પછી
છેવટે યુધિષ્ઠિર જ્યારે આખા રણ મેદાન તરફ નજર નાખે છે અને વિચાર કરે છે તો કહે છે કે એના બધા જ પુત્રો મરી ગયા છે, એટલે પાંડવોના પુત્રો પણ મરી ગયા છે. પાંડવોના પુત્રોની અગ્નિ સંસ્કાર યુધિષ્ઠિરને કરવા પડે છે. ત્યારે એ કહે છે કે યુદ્ધ એ વિનાશનું કારણ છે. યુદ્ધ કરવાથી કોઈને લાભ ના થયો, ન અમને લાભ થયો ન એને લાભ થયો. બધું જ એ લોકો તો મરી ગયા બધાએ, પણ અમે જેના માટે યુદ્ધ કર્યું હતું એ પણ ન બચ્યા. કે બાળકો માટે, કે અમને અમારી સંતતિ, અમારા ભવિષ્યમાં અમારા પરિવારને કંઈક મળશે, રાજ ભોગવીશું તો એ લોકો રાજગાદી ભોગવી શકશે. પણ એ લોકો જ ન રહ્યા, એટલે કે સંતતિ જ ન રહી. અને એ કહે છે કે યુદ્ધ એ વિનાશનું કારણ છે. તો આવું યુદ્ધ આપણા મનની અંદર કશાયોથી આપણે રોજ કર્યા કરીએ છીએ, અને છતાંય આપણે સમજતા નથી કે આપણે આ કશાયો કરવા જેવા નથી, અને છતાંય કશાયો કર્યા કરીએ છીએ. એટલે કહે છે કે ઉપશમ ભાવ ધારણ કરવો જોઈએ, રુજુતા ધારણ કરવી જોઈએ, નમ્રતા ધારણ કરવી જોઈએ, અને સંતોષ ધારણ કરવો જોઈએ. એ આ પર્યુષણ પર્વનો સીધો ઉપદેશ છે. અને આવું કરવા છતાં પણ, એટલે કે ઉપશમ ધારણ કર્યો હોય, સરળતા રાખી હોય, નમ્રતા રાખી હોય અને સંતોષ રાખ્યો હોય, અને છતાં પણ આપણને કષ્ટો આવે તો શું કરવું? તો કહે છે કે ત્યારે તમે સંભાવ ધારણ કરજો, સામ્ય ભાવ, સમતા ભાવ ધારણ કરજો, તો તમે તમારા જે ગુણો છે એને ટકાવી શકશો. નહીં તો ગુણોને વિખેરાઈ જતા, ગુણોને નષ્ટ થઈ જતા વાર લાગશે નહીં. ગૌતમ બુદ્ધ પાસે એનો પહેલો શિષ્ય આનંદ છે. ભગવાન મહાવીરનો પહેલો ગૃહસ્થ શિષ્ય આનંદ છે, અને અહીંયા એમનો સંન્યાસી શિષ્ય આનંદ છે. એ આનંદ આવીને કહે છે કે ભગવાન, તમને આ નગરની અંદર પ્રવેશ કરતા લોકોએ ગાળો દીધી તોય તમે કશું બોલ્યા નહીં. તો કે બરાબર છે. તો કે શું બરાબર છે? તમારે કંઈક તો પ્રતિકાર કરવો જોઈતો હતો, અને કંઈ નહીં તો છેવટે તમારે પ્રવચનમાં તો કહેવું જોઈતું હતું કે આ ગામના લોકો સાવ અજ્ઞાની છે, મૂર્ખ છે. તો કે બેસ ભાઈ, તું હું તને સમજાવું. તને કોઈ ખાવાનું આપે અને તું ન લે એ ખાવાનું, તો એ કોની પાસે રહે? તો કે જે લઈને આવ્યો એની પાસે રહે. પછી કહે છે કે તને કોઈ વસ્તુ આપે અને એ તું ન સ્વીકારે, તો એ કોની કહેવાય? તો કે જેની હોય એની કહેવાય. હું સ્વીકારું તો મારી થાય, હું ખાવાનું લઉં તો મારે ખાવું પડે. તો કે બસ આ એવું જ છે. એણે મને ગાળો આપી, મેં સ્વીકારી નહીં, તો એની વસ્તુ એની પાસે રહી. જો આ જાગૃતિ આવી જાય આપણા જીવનની અંદર કે જેનું જે છે એનું એની પાસે રહે, મારે તો સંભાવમાં રહેવું છે, તો સાચા અર્થમાં આપણે ક્રોધને ટાળી શકીશું, સાચા અર્થમાં અતિચારોનું પ્રતિક્રમણ કરી શકીશું, સાચા અર્થમાં આપણે કષાયોનું પ્રતિક્રમણ કરીશું, અને આપણી થોડી મોહની જે ગાઢ નિદ્રા છે એ ઓછી થશે અને આત્મજાગૃતિ વધશે. આટલું કહીને આજનું આપણે સ્વાધ્યાય પૂર્ણ કરીએ છીએ. સર્વમંગલ માંગલ્યમ સર્વકલ્યાણકારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણામ જૈનમ જયતિ શાસનમ. નમો દુર્વારરાગાદિ વૈરિવાર નિવારિણે અર્હતે યોગીનાથાય શ્રી મહાવીરાય તાયિને. પન્નગે ચ સુરેન્દ્રે ચ કૌશિકે પાદસંસ્પૃશી નિર્વિશેષમનસ્કાય શ્રી મહાવીરાય તાયિને. કૃતાપરાધેપી જને કૃપામંતરતારયો ઈષદ્બાષ્પાર્ધયોર્ભદ્રમ
श्रीविरचिननेत्रयो श्रीविरचिननेत्रयो। आज 10 लक्षण पर्युषण पर्व का प्रथम दिन है। धर्म के 10 लक्षण, उस 10 लक्षण के प्रत्येक एक एक लक्षण को लेकर के प्रतिदिन स्वाध्याय किया जाता है। इन दिनों में हमारे वहाँ जैन धर्म की जो परंपरा है, जैन शासन का जो मुख्य उपदेश है वह मोक्ष प्राप्ति की साधना है। सारे कर्म, सारी क्रियाएं, सारे आचार, उसके पीछे एक ही भाव रहा है, वह है मोक्ष। यदि क्रियाएं करते हुए भी हमारा लक्ष्य मोक्ष की तरफ न हो तो वो उन सारी क्रियाएं, जो क्रिया हम धार्मिक क्रिया के रूप में मानते हैं, वे सारी क्रियाएं व्यर्थ हो जाती हैं। इसलिए जैन धर्म को मोक्षैक लक्ष्य धर्म, एकमात्र केवल मोक्ष का लक्ष्य लेकर के चलने वाला धर्म है। मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए, मोक्ष प्राप्ति का क्या उपाय हैं और जीवन में उसको कैसे हम चरितार्थ करें, उसके लिए पर्वों का आयोजन किया गया है। पर्व के दिन हमारे शास्त्रों का स्वाध्याय, चिंतन, मनन, प्रभु भक्ति और आराधना, तप करते हुए हम मोक्ष की तरफ आगे बढ़ते हैं। 9 तत्व जो जैन परंपरा के मूलभूत तत्व के रूप में हम जानते हैं, तत्वार्थ सूत्रकार उमा स्वामी जी तत्वार्थ सूत्र के प्रथम सूत्र में ही फरमाते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष प्राप्ति के मार्ग या मोक्ष प्राप्ति के उपाय के रूप में 3 तत्वों का कथन किया गया। सम्यक दर्शन, दर्शन के बारे में हम जब चिंतन करते हैं तो दर्शन केवल श्रद्धा नहीं है। दर्शन के साथ निश्चय और व्यवहार की दृष्टि से हम चिंतन करें तो दर्शन एक अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ बन जाता है। हमारा जो बाह्य व्यवहार देव, गुरु और धर्म के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, शास्त्रकारों ने बताया है कि ये सारे व्यवहार नई की अपेक्षा से दर्शन हैं, सम्यक हैं, तथापि व्यवहार नई की अपेक्षा से सम्यक हैं। निश्चय नई की दृष्टि से देखा जाए तो तत्व की रुचि, तत्व की श्रद्धा, तत्व के प्रति हमारा आंतरिक रुझान, अंदर से हमें तत्व के प्रति भाव पैदा होना चाहिए। कई बार हमारे मन में ये प्रश्न उठता होगा कि हम हर बार ये बात सुनते हैं,
सम्यक दर्शन का अर्थ कई बार सुना है, हमारे कानों में गया है, कानों से गुजरा है, या पहली बार हम आज सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है। जो शब्द हमने कई बार सुना है, जिनसे हम बहुत परिचित हैं, तथापि हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता है, हमारा जीवन धन्य क्यों नहीं बनता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग एक सरलतम सूत्र है, मोक्ष का मार्ग बता दिया। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए सर्वार्थ सिद्धिकार पद्मनंदी जी ने यह प्रश्न उठाया है कि हम तो मोक्ष की बात करने आए थे, मोक्ष की बात करनी चाहिए, मोक्ष का स्वरूप बताना चाहिए, और आपने मोक्ष का स्वरूप बताने की बजाय मोक्ष के मार्ग की बात करने लगे। मतलब जिसको प्राप्त करना है उसको बताने, उसका स्वरूप बताने की बजाय मार्ग का स्वरूप बताने की जो चेष्टा की, तो वो क्यों की, उसका जवाब पूज्यपाद देवानंदी सर्वार्थ सिद्धि टीका, जो तत्वार्थ सूत्र की दिगंबर परंपरा की प्रथम टीका है, और उस टीका में बहुत ही रोचक बात कही गई है कि जब तक हम मार्ग को नहीं पकड़ेंगे तब तक हमारे डेस्टिनेशन तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आवश्यक है मार्ग का अनुसरण करना, मार्ग पर चलना, मार्ग के ऊपर चढ़ जाना। मार्ग के ऊपर चढ़े बिना, मार्ग पर आए बिना हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है मार्ग पर चलना। इसलिए मोक्ष की बात न करते हुए हमने मार्ग की बात की है। तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्याय, उस 10 अध्याय में मार्ग का चिंतन 9 अध्याय तक किया। 9 अध्याय यानी कि पूरा तत्वार्थ सूत्र, और केवल मोक्ष का चिंतन 10वें अध्याय में केवल 7 सूत्रों में किया गया है। केवल 7 सूत्र, 340 सूत्र हैं। 340 सूत्र में से मोक्ष के लिए केवल 7 सूत्र हैं, और बाकी के सारे सूत्र यानी 95% सूत्र मार्ग की व्याख्या करते हैं, और 5% सूत्र, केवल 5% सूत्र जो मोक्ष की बात करते हैं। उससे ये बात हमारे समझ में आनी चाहिए कि मार्ग ही कठिन है, मार्ग का समझना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम मार्ग पर नहीं चढ़ पाते तब तक हम कई बार इस धर्म के द्वार पर आकर भी वापस गए हैं। धर्म का द्वार का मतलब है कि धर्म अंदर प्रवेश होना चाहिए, धर्म का अंदर प्रवेश होना चाहिए, धर्म का आचरण अंदर से आना चाहिए। धर्म के लिए हमारे मन में जो भाव उठना चाहिए वो जब तक उठेगा नहीं तब तक हमारे अंदर धर्म प्रवेश नहीं करता है। धर्म के द्वार तक हम पहुंचते हैं, द्वार पर पहुंचकर लौटे हैं। यह पहली बार हुआ है ऐसी बात नहीं है, कई बार ऐसा हुआ है। कल्याण मंदिर स्तोत्र जो सिद्धसेन दिवाकर सूरी की रचना है, उसमें फरमाया है कि आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षतोपि नूनम न चेतसि मया वितृतोषि भक्त्या जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। प्रश्न ये उठाया है उन्होंने कि यह दुख आत्मक जो संसार है, दुखात्मक संसार में मैं भटक रहा हूँ। इन दुखात्मक संसार में भटकते हुए कई जन्मों बीत गए। ये पहला जन्म नहीं है, इसके पहले हमने बहुत जन्म पाए हैं, बहुत बार मनुष्य भी बने हैं,
जो पुद्गल परावर्तन की प्रक्रिया बताई है, पुद्गल परावर्तन की प्रक्रिया को हम गौर से जानने की कोशिश करें, उसके विषय में हम सुनने की या समझने की चेष्टा करें, तो हमारा भूतकाल क्या था, हमारा इस जन्म के पहले का समय कैसा था, वो जानने की, वो हमें समझ आएगी। और उस समझ से हमें ये पता चलेगा कि इतने काल से हम क्यों भटक रहे हैं। और यदि वैसा ही आचार रहा तो हमारा भावी भविष्य भी भटकने में ही जाएगा। इस प्रश्न को लेकर के सिद्धसेन दिवाकर सूरी ने बहुत ही बड़ी रोचक बात कही है कि परमात्मा, मेरा और आपका समागम यहाँ पहली बार नहीं हुआ है, पूर्व में भी, मतलब इस जन्म से पहले के जन्म में भी मेरा और आपका परिचय हुआ होगा। कभी कभी तो वैसा हुआ होगा कि हम परमात्मा के समवसरण में जाकर के खुद परमात्मा को परमात्मा का दर्शन किया होगा, परमात्मा की वाणी को सुनी होगी, परमात्मा की पूजा की होगी, परमात्मा की स्तुति की होगी। आकर्णी तो भी हमने आपकी देशना को सुनी होगी। महितोपी में हमने आपकी पूजा भी की होगी। कोई ऐसा भव आया होगा, उस भव में हमने वितराग परमात्मा को साक्षात सुना भी होगा, साक्षात उनकी पूजा भी की होगी, साक्षात उनकी स्तुति भी की होगी। तथापि हमारा निस्तार, हमारा इस संसार से छुटकारा नहीं हो पाया। हम इस संसार में भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं, इसका जवाब इस प्रथम सूत्र में दिया गया है। इसका जवाब हमें आज से जो आने वाले 10 दिन हैं, उस 10 दिनों में चिंतन करने की प्रक्रिया बताई है। जो 10 उत्तम धर्म बताए हैं, उस 10 उत्तम धर्म का चिंतन करना है। और उस चिंतन की दिशा में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर जिस देह हमें मिला है, उसके अंदर जो हमारा मन है, मन के अंदर कितने भाव कैसे पड़े हैं, स्वयं उसका विश्लेषण करना है। स्वयं को, अपने आप को देखना है। स्वयं को देख करके अपनी आप ही खुद को पहचानने की कोशिश करनी है। उत्तम धर्म, जो 10 उत्तम धर्म हैं जिसकी बात हम करेंगे, उसका आज प्रथम दिन है। उस प्रथम दिन की ये पहली जो चर्चा है, पहला चिंतन है, वह यह है कि हम इस संसार से मुक्त क्यों नहीं हो पाए। उसका मूल कारण ये है कि हमने सही रास्ता चुना नहीं है। आज तक हमने जितने भी रास्ते चुने हैं, वो गलत जगह पर ले जाने वाले रास्ते थे। छोटी सी एक कहानी है। कुछ लोग शाम को नदी पर आए हैं। नदी के एक छोर से उन लोगों को दूसरे किनारे पर जाना था, नदी पार करनी थी। शाम हो चुकी थी और जो लोग इकट्ठे हुए थे, 5-10 लोग, उन्होंने नशा किया हुआ था। नाव में बैठ गए, खाली पड़ी थी नाव में बैठ गए और नाव को चलाने लगे। नाव को चलाते गए। सबको लगा कि हम जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सुबह जब पता चला कि हम तो वहीं के वहीं हैं। क्यों वहीं के वहीं हैं? तो रस्सी बंधी हुई थी, वो रस्सी निकालना भूल गए थे, रस्सी नहीं हटाई थी। यहां रस्सी का मतलब है कि हमारा मन संसार से बंधा हुआ है। हमारी मन की रस्सी संसार से बंधी हुई है और हम नाव को बहाते जा रहे हैं। हम मानते हैं कि हमने बहुत पुरुषार्थ कर लिया, धर्म बहुत कर लिया, बहुत स्वाध्याय कर लिया, सब कुछ जानने लगे हैं। नव तत्व की बात तो कहाँ आता है? सब कुछ आता है। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, बंध, निर्जरा, मोक्ष,
फट फट बोलने लगेंगे। कहेंगे कि कर्म की बात तो कहाँ आता है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, 5 ज्ञान की बात तो कहाँ, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोप्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान। सब कुछ जानते हुए भी हमारी जो रस्सी है, जो रस्सी बांधी हुई है, उस रस्सी को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। हमारी रस्सी इस संसार से जुड़ी हुई है और उस संसार से जुड़ी हुई रस्सी को न छोड़ना चाहते हैं, न तोड़ना चाहते हैं, और नाव को एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाने की चेष्टा कर रहे हैं। इसीलिए तत्वार्थ सूत्रकार ने पहला सूत्र ये बताया कि मार्ग को सही अर्थ में पकड़ लो। जब मार्ग आपके हाथ में लग जाएगा, रास्ता आपको मिल जाएगा, फिर यात्रा सरल हो जाएगी। यात्रा करनी तो है, लेकिन मार्ग चुनने की हम गलती कर बैठते हैं और उस गलती में ही हम जीवन बिता देते हैं। पूज्यपाद देवानंदी ने इसको बहुत विस्तार से बताया और दूसरे सूत्र में ये बताया कि जब तक जीवन में तत्व के प्रति रुचि पैदा नहीं होगी, जब तक हम धर्म के तत्वों को जानने की रुचि पैदा नहीं करेंगे, तब तक इस संसार के स्वरूप को जान नहीं पाएंगे और देह के स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। 10 धर्म जो हैं, उस 10 धर्म को समझने से पहले 10 जो लक्षण बताए हैं धर्म के, हमारे लिए धर्म का अर्थ क्रियाकांड मात्र रह गया है। और वह क्रियाकांड जिसमें हमारा मन नहीं लगा हुआ है। यदि क्रियाकांड में मन लग जाता तो वो क्रिया सार्थक हो जाती। निष्प्राण क्रिया है, आप शब्द को बराबर गौर से सुनिएगा कि निष्प्राण क्रिया, क्रिया के 2 भेद आप करेंगे तो पता चलेगा कि एक सप्राण क्रिया और एक निष्प्राण क्रिया। सप्राण जिसमें हमारा भाव जुड़ा हुआ है, वो सप्राण सजीव क्रिया है, सार्थक क्रिया है, सफल क्रिया बन जाती। एक छोटा सा दृष्टांत आगम ग्रंथों में आता है। विनय नाम के एक लड़के का, छोटा सा लड़का है, उन्होंने अपने पिता से एक ही बात सुनी थी और एक ही बात समझ ली थी। एक बात कह दी और वही बात पकड़ ली थी। हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी कहा करते थे, विद्यार्थी अवस्था होती है, बाहर पढ़ने जाते हैं तो एक बात मन में लगी रहती है कि थोड़े समय में बहुत कुछ पढ़ लें, और पढ़ने का भी इतना अंदर से भाव लगा हुआ होता है, बहुत पढ़ ले, बहुत पढ़ ले, बहुत सारी विद्या अर्जित कर ले। ये विद्यार्थी का स्वभाव होता है, विद्यार्थी की ये सहज रीति होती है। तब गुरु कहते हैं कि सब साधे सब जाए, एक साधे सब सधे। कहते थे, बार बार कहते थे कि सब साधे सब जाए। यदि आप सब कुछ प्राप्त करने की चेष्टा एक साथ करोगे, एक साथ सब कुछ साधने की, एक साथ सब कुछ सीखने की चेष्टा करोगे, तो एक भी विषय में आप प्रवीण नहीं हो पाओगे। यदि आपको प्रावीण्य प्राप्त करना है, यदि आपको निष्णात बनना है, यदि आपको एक्सपर्ट बनना है, तो एक को साधने की कोशिश करो। एक साधे सब सधे, एक को साधोगे तो सब सध जाएगा, सभी चीज में आप प्रवीण हो जाओगे। एक को ध्यान से, उसको बराबर गौर से देखते जाओ कि क्या क्या गलती कर रहा हूं मैं अपने जीवन में, जिस क्रिया को कर रहा हूं वो क्रिया सार्थक क्यों नहीं होती है। शास्त्रकार ने तत्वार्थ सूत्र की पूर्व पीठिका में ये प्रश्न उठाया है कि सम्यक दर्शन शुद्धम
ज्ञानम दर्शनम मेव च तेन सुलब्धम इदम दुख निमित्तम अपि इदम तेन सुलब्धम भवति जन्म। मैं तत्वार्थ सूत्र की बात इसलिए कर रहा हूं, तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्याय हैं। इन 10 दिनों में हमें एक एक अध्याय का स्वाध्याय करना चाहिए। या 9वें अध्याय में इन 10 धर्मों की बात बहुत ही विस्तार से की गई है, जिन 10 धर्मों की चर्चा हम आने वाले दिनों में एक एक धर्म को लेकर करने वाले हैं या करेंगे। तो उस दृष्टि से तत्वार्थ सूत्र मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है। उनके प्रत्येक सूत्र रत्न समान है। इस रत्न को प्राप्त करने के बाद यदि हम उसको ठीक से अंदर नहीं उतार पाएंगे तो हमारे हाथ से रत्न व्यर्थ हो जाएंगे। जो प्राप्त हुआ है वो भी नष्ट हो जाएगा। वहाँ तत्वार्थ सूत्रकार कहते हैं कि सम्यक दर्शन शुद्धम, यदि आपका ज्ञान तत्व ज्ञान से, तत्व की रुचि से युक्त है, अंदर से रुचि पैदा हुई है, अंदर से धर्म करने का मन हुआ है, हो सकता है पहला नियम, पहला कदम केवल कुतूहल से उठा हो सकता है, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुतूहलता में से हमें निकल करके वास्तविक तत्व रुचि की ओर आगे बढ़ना है। यह विनय नाम का एक छोटा सा लड़का अपने पिता से यही बात सीखा है कि अपने से बड़े हो उनका विनय करना चाहिए। ये एक छोटी सी बात सीखा है। तो उसने, छोटा बच्चा है, उसने ये अपने पिताजी को पूछा कि क्या आप मेरे से बड़े हैं? बच्चा है, उसको ये पता नहीं है कि क्या पूछना चाहिए, पिता को क्या पूछना चाहिए, माँ को क्या पूछना चाहिए। उनके मन में जो बात आती है वो बात पूछ लेता है कि हाँ बड़ा हूँ। तब से वो उसका विनय करने लगा। विनय करते करते जितना भी उससे हो सकता था वो करने लगा। एक दिन उसने जिद की है अपने पिताजी के पास साथ ऑफिस जाने की। ऑफिस पर पहुंचता है। ऑफिस में एक बड़ा व्यापारी आता है। उस बड़े व्यापारी को पिताजी बहुत सम्मान देते हैं। तो बच्चा पूछता है कि ये आपसे बड़े हैं? तो कहा ये मेरे से भी बड़े हैं। बच्चे ने उनका विनय करना शुरू किया। उस आदमी के साथ रहने लगा। जब वो आदमी जो बड़ा था वो एक दिन नगर शेठ के घर गया, नगर शेठ के पास गया, तो उन्होंने नगर शेठ का विनय किया। बच्चे ने पूछा कि आप तो बहुत बड़े शेठ थे, मेरे पिताजी कहते थे कि आप इतने बड़े हों और आप ये नगर शेठ का विनय कर रहे हैं। तो कहा वो तो मेरे से भी बड़े हैं। तो उसने नगर शेठ का विनय करना शुरू किया। नगर शेठ एक बार अभय कुमार के पास गए। मंत्रीश्वर थे, मंत्री थे, मंत्री का विनय करने लगे। वो मंत्री अभय कुमार का विनय करने लगा। एक छोटी सी बात जो मन में बैठी हुई थी, उस बात को उन्होंने बराबर पकड़ा हुआ है, उसको उन्होंने छोड़ा नहीं। और एक धर्म को, एक सिद्धांत को, एक नियम को पकड़ कर चलने वाला ये बालक धीरे धीरे परमात्मा महावीर तक अभय कुमार के द्वारा श्रेणिक के पास, श्रेणिक के द्वारा महावीर के पास पहुंच गया और विनय रत्न नाम का बहुत बड़ा श्रमण साधु बन गया। तो ये एक बात को पकड़कर चलने वाला आदमी, छोटा सा बच्चा, अपने जीवन में परमात्मा तक पहुंच जाता है। और हम तो कई बातों को पकड़कर चलते हैं लेकिन परमात्मा तक पहुंच नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? वो इन 10 दिनों में मुख्य चिंतन का विषय है। तत्वार्थ सूत्र की ये प्रथम गाथा में ये बताया कि सम्यक दर्शन शुद्धम ज्ञानम विरति मेव च। सम्यक दर्शन से शुद्ध यदि सम्यक ज्ञान है, मतलब स्वाध्याय, बीज तत्व की रुचि से यदि स्वाध्याय किया जाता है तब वह स्वाध्याय बनता है। अन्यथा स्वाध्याय अहम पैदा करने वाला हो सकता है। स्वाध्याय करने के बाद भी अहंकार पैदा हो सकता है।
यदि उसमें सम्यक दर्शन नहीं जुड़ा हुआ है, सम्यक रुचि नहीं जुड़ी हुई है, तत्व की श्रद्धा नहीं जुड़ी है, तो और आगे चलकर कहते हैं कि दुख निमित्तम अपि इदम संसारम, यह संसार दुख का निमित्त है। आप एक कदम उठाते हो तो दुख के प्रति ही वह कदम उठता है, आप दौड़ते हो तो दुख के प्रति ही दौड़ते हो। ऐसा संसार यदि सफल बनाना है तो सम्यक दर्शन चाहिए, और सम्यक दर्शन है तत्व की रुचि, तत्व की श्रद्धा। तत्व की श्रद्धा करते करते आगे बढ़ करके ये बताया कि यदि तत्व की रुचि पैदा हो जाती है तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि तत्व क्या है। रुचि पैदा हो गई तो रुचि पैदा होने के बाद बच्चा जब पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ने लगता है तो उनके मन में ज्ञान के प्रति रुचि पैदा होती है। तो पहला प्रश्न ये उठता है कि ज्ञान क्या है और मुझे कौन सा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और जो बच्चा अपने को जो ज्ञान प्राप्त करने का निर्णय सही ढंग से कर लेता है वो बहुत अन्य बच्चों से जल्दी आगे बढ़ जाता है, लेकिन जो मार्ग का चयन नहीं कर पाता है वो भटक जाता है। और यहाँ इन दिनों में हमें 3 बात समझनी है, वो है कि इन तत्वों में कौन सा क्या तत्व क्या है और उस तत्व का स्वरूप क्या है। तत्व के स्वरूप में 3 बातें बता दी, हेय, ज्ञेय, उपादेय। कुछ ऐसे तत्व हैं जिसको जानने की जरूरत है, कुछ ऐसे तत्व हैं जिसको छोड़ देने की जरूरत है, और कुछ ऐसे तत्व हैं जिसका स्वीकार करने की आवश्यकता है। जीव और अजीव तत्व ज्ञेय हैं, यानी जानने योग्य है, जानने की आवश्यकता है। जीव किससे कहते हैं, अजीव किससे कहते हैं। ये 2 तत्व यदि हम जान लेते हैं, जीव और अजीव को जान लेते हैं, जीव का स्वरूप जान लेते हैं, अजीव का स्वरूप जान लेते हैं, तो हमारे जीवन में अहिंसा अपने आप आ जाती है। जीव का स्वरूप जो नहीं जानता है उनके लिए अहिंसा बहुत बड़ी बात हो जाती है। हिंसा सहज बन सकती है लेकिन अहिंसा बहुत बड़ी बात हो। जब ये समझ में आ जाए कि मेरी जैसी ही आत्मा अन्य शरीर में, अन्य जीव में है, और ये जो मेरी जैसी आत्मा अन्य में है, ये समानता का भाव, मतलब मेरे में जो तत्व पड़ा हुआ है वह आप में है, वह अन्य में है, वह छोटे में भी है, वह बड़े में भी है। तो हमें विनय सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ईर्ष्या को छोड़ने की बात कहने की जरूरत नहीं रहेगी, क्रोध करने का त्याग करने की बात नहीं करनी पड़ेगी। हमारे पास शास्त्र अनेक हैं, हमारे पास ग्रंथ अनेक हैं। उपनिषदकार जो सबसे छोटा सा उपनिषद है लेकिन सबसे पहला उपनिषद है, जिसको ईशावास्य उपनिषद कहते हैं। उपनिषद की बात यहाँ इसलिए आवश्यक है, जिन्होंने समता का पाठ सिखाया, भारतीय परंपरा में समता का महत्व समझाते हुए उस ग्रंथ के अंदर केवल 18 श्लोक का छोटा सा ग्रंथ है, केवल 18 श्लोक हैं। उस 18 श्लोक पर विवेचन तो बहुतों ने किया, आज भी लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें से जितने चिंतकों ने जितना चिंतन किया इतना अपर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है। आज भी उसके ऊपर चिंतन हो रहा है। कहा जाता है कि डॉक्टर राधाकृष्णन एक बार ईशावास्य उपनिषद पर बोलने लगते थे तो 18 घंटे तक नॉन स्टॉप उस पर विवेचन कर सकते थे। उसमें एक बात कही है कि यो एकत्वम अनुपश्यति, जो एकत्व को देख लेता है, जो सब में एक तत्व, आत्म तत्व, समान आत्म तत्व पड़ा हुआ है, उसको देख लेता है या उसको जान लेता है, तत्र क मोह क शोक, उसको कोई मोह नहीं होगा, कोई शोक नहीं होगा। हम उस समानता को जान नहीं पाते हैं क्योंकि जीव को ही नहीं जानते हैं,
और जीव को नहीं जानते। इसलिए समानता की बात हम आजकल बहुत बात चर्चा करते हैं, इंटरफेथ की बात करते हैं। गांधी जी ने भी इंटरफेथ की बात की, सर्वधर्म संभाव की बात कही, लेकिन कितने लोगों में ये भाव आया, कितने लोगों ने ये भाव अपनाया? बहुत कम लोगों ने, बहुत कम लोग ये आगे बढ़ पाए। खैर वो आज का विषय नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि जीव और अजीव ये दो तत्व यदि हम जान लेते हैं तो हमारे जीवन में स्पष्ट विवेक उत्पन्न हो जाता है कि जीव कौन है, अजीव कौन है, किसकी रक्षा करनी चाहिए और किसका स्वरूप जानना चाहिए। और ये बात समझ में आ जाए, उसके बाद आता है हेय तत्व, किसको छोड़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। एक शेठ थे, उसने सोचा कि मेरे पास जितना धन है उतना कम है, बहुत ही कम है। बहुत कुछ था, नगर में सबसे बड़ी हवेली उनकी थी, फिर भी उनको लगता था कि ये कम है। कोई योगी के पास गए, उन्होंने कहा कि योगी जी महाराज, आपको जो चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, आपको सब कुछ दे दूंगा मैं। कोई ऐसा मंत्र बता दो कि मेरे पास जितना भी हो उससे बढ़ने लगे, बहुत बढ़े, अनेक गुना हो जाए। हम भी वही कार्य कर रहे हैं। आजकल तो वो इतनी परंपरा भारत में भी नष्ट हो रही है। जब वही खाता का पूजन करते हैं तो लिखते हैं कि शालिभद्रनी रिद्धि हो जो, शालिभद्र की रिद्धि हो जो क्यों मांगते हैं? परमात्मा का वैराग्य हो ऐसा हम नहीं मांगते हैं। शैलेश भाई लिखते हैं इसमें कि परमात्मा महावीर का वैराग्य हमें प्राप्त हो, नहीं लिखते हैं। रत्नाकरनी मेहर हो जो लिखते हैं। रत्नाकर यानी समुद्र, समुद्र में जैसे रत्न मोती वगैरह हजारों साल से मिल रहे हैं, अभी भी खत्म नहीं हुआ, वैसे ही मेरी संपत्ति रत्नाकर की तरह हो जाए। अभय कुमार की बुद्धि हो जो लिखते हैं, अभय कुमार की हमारे मन में बुद्धि हो। अभय कुमार परमात्मा का परम श्रावक था, परमात्मा का परम भक्त था। हम परमात्मा के पास जाकर के क्या करते हैं? भक्त बनने की चेष्टा तक नहीं करते हैं। हम यही मांगते हैं परमात्मा के पास आकर के भी मेरा सारा काम अच्छी तरह चलने लगे, मेरा सारा संसार सुखी हो जाए, बस सब कुछ ठीक हो जाए। जो ठीक है उसमें पर्याप्ति नहीं है, उसमें आनंद नहीं है। यह शेठ भी योगी के पास जाकर कहता है कि कोई मंत्र बता दो, मैं साधना करने के लिए तैयार हूं। योगी ने कहा कि मेरे पास एक मंत्र है, आज तक मैंने किसी को दिया नहीं है, लेकिन मैं आज तुझे, तेरी जो भावना है उसको देखते हुए मैं तुझे देता हूं, याद रखना ये किसी को देना मत। कहा ठीक है। साधना भी बता दी, मंत्र भी दे दिया। शेठ खुश हो गए। मंत्र की साधना करते करते देव को प्रसन्न कर दिया। देवता प्रसन्न हुए और कहा कि भाई क्या चाहिए? तो कहा कि मुझे बहुत सारी संपत्ति चाहिए। तो कहा कि एक शर्त है केवल, तू जितनी संपत्ति मांगेगा उससे दुगुना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। आदमी चाहता है, बहुत कुछ चाहता है, लेकिन वैसा किसी के पास न हो, साथ में वो भी भाव पड़ा है कि मेरे पास जो है वो किसी अन्य के पास न हो। शास्त्र तो ये बताते हैं कि जब आप देते हो तो अनंत गुना होता है, नहीं देते हो तो वो नष्ट हो जाता है। कई ऐसे दृष्टांत हैं। इन दिनों में हमें वैसे ही दृष्टांतों पर गौर से चिंतन करना है। शालिभद्र ने खीर बहराई थी तो उनके घर में लब्धि प्राप्त हुई थी। ऋषभदेव भगवान के पूर्व भावों में ऋषभदेव ने साधु को घी बहराया था और
उससे सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई थी। महावीर ने नैसार के भाव में साधु को बहराया था और सम्यक्त्व की प्राप्ति होते होते तीर्थंकर तक पहुंच गए। तो सभी में ये बात बताई गई, सभी क्रियाओं में ये बताया गया कि आप दोगे तो आपको मिलेगा, लेकिन आप पकड़ के रखोगे या पकड़ने की चेष्टा करोगे तो हाथ नहीं लगेगा या आपके हाथ से निकल जाएगा। यह शेठ सोचने लगा कि ये देवता खुश भी हुए तो क्या हुआ, बेकार है, मुझे मिल जाए लेकिन दूसरे को मिल जाए तो अभिशाप हो गया, ये तो नहीं चाहिए था। लेकिन कहा, सोचा कि नहीं, इतना भी तो मिल जाए तो अच्छा है। तो पहले ही उसने मांगा कि ये मेरी, देवता को कहा कि ठीक है, यही वरदान आपको देना है तो भी मुझे मान्य है, क्योंकि मुझे तो मिलेगा, दूसरे को जो भी मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन मुझे मिलेगा। लेकिन जब पहले ही दिन उसने ये सोचा कि मेरी ये हवेली है वो नई हो जाए, बड़ी हो जाए और सुंदर हो जाए, देवता का आदेश था, तथास्तु हुआ, इतना बड़ा बन गया। सामने पड़ोसी के दो दो हवेलियां बन गई तो निराश हो गया, ईर्ष्या होने लगी कि मेरा तो इतना ही है और पड़ोसियों को इतना सारा मिल गया, अब क्या करूं। वकील के पास गया, वकील को कहा कि भाई कुछ करो। तो कहा कि उसका रास्ता है, मिल जाएगा, क्योंकि फी मिलने वाली थी, फीस उनको, इसलिए रास्ते तो निकल ही जाते हैं, सारे शास्त्र हैं, लेकिन हम भी तो रास्ते निकाल लेते हैं। उसने कहा कि रास्ता है, पहला प्रयोग मैं बताता हूँ, उसके अनुसार आपको मांगना कि मेरे घर के आगे एक बड़ा कुआं हो जाए। तो कहा कि उससे क्या होगा, अरे जाकर मांगो तो सही, पहला प्रयोग, पहला मैंने अपना एक टिप दी है, उस टिप के अनुसार काम करो और अपनी फीस देकर देते जाओ। उसने कहा ठीक है। उसने कहा कि मेरे घर के सामने एक बहुत बड़ा कुआं हो जाए। हो गया कुआं, सबके सामने दो दो कुएं हो गए। दूसरे तीसरे दिन आया कि अब क्या मांगू। तो कहा कि अब ये बात करो कि मेरी एक आंख फूट जाए। तो वो कहने लगा सेठ कि बस अब समझ में आ गई बात, अब खुश हो गया। यही चेष्टा हम करते आ रहे हैं, ईर्ष्या, मात्सर्य, द्वेष, लोभ, लालच, और उसके कारण हमारे अंदर जो दुर्गुण पड़े हुए हैं, जो दोष पड़े हैं, उस दोष को निकालने की बजाय हम दोष को बढ़ावा देते जा रहे हैं, वृद्धि करते जा रहे हैं। आप जान पाए होंगे, आप समझ ही गए होंगे कि एक आंख फोड़ने की चेष्टा मांगने पर दूसरे लोगों को, सबको अंधा बना देने की बात थी। शास्त्र कहता है कि ये जो पर्युषण पर्व है, 10 लक्षण धर्म है, वो अंदर की आंख खोलने वाला धर्म है, वो अंदर की आंख बंद करने वाला धर्म नहीं है। आपको हमेशा हमेशा आंख कैसे खुले वो बात बताने वाली है। तो जितनी भी बातें इन दिनों में हमें सोचनी है वह है कि हम कम से कम जो हेय पदार्थ हैं उसको समझे। हेय पदार्थ हैं वह हैं बंध, पाप और आश्रव। बंध, पाप और आश्रव ये हेय हैं, उसको छोड़ने जैसे हैं। उसके स्वरूप को समझ करके हमें उसको छोड़ना चाहिए और उपादेय यानी स्वीकार करने लायक स्वीकार करना। तो स्वीकार क्या करना है? निर्जरा और संवर। निर्जरा का अर्थ हम सब जानते हैं, उसका विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है। संवर का अर्थ भी हम जानते हैं, लेकिन संवर के अंदर ये आता है 10 लक्षण, इसलिए संवर का अर्थ गौर से सोचना चाहिए। कहा कि जब तक आप कचरे को निकालना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सारी खिड़कियां बंद कर देनी पड़ेगी और फिर
मकान साफ करने की चेष्टा करनी होगी। यदि आप अपने घर की खिड़कियां खुली रख करके मकान को साफ करने की चेष्टा कर रहे हैं, मकान को सजाने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर के कमरे को सजाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि खिड़की से और कचरा अंदर गिरता जाएगा। हम संवर को तो जानते ही नहीं है, लेकिन हमारी जितनी खिड़कियां हैं जहाँ से कचरा आ सकता है, उन सब खिड़कियों को, उन सब द्वारों को खुला छोड़ करके बैठे हैं, और खुला छोड़ करके मस्ती से बैठे हैं। बहुत आनंद आ रहा है। एक श्रेष्ठी भोजन कर रहे थे, भोजन करते करते उनको समाचार दिया गया, उनको न्यूज़ सुनाया गया। कई बार हम लोग बैठे होते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो हमारी नज़र न्यूज़ के अंदर जाने के बजाय नीचे ब्रेकिंग न्यूज़ आता है, उसके ऊपर ज़्यादा पड़ती है। वैसा ही एक ब्रेकिंग न्यूज़ उसके भोजन करते करते मिला कि तुम्हारी पूरी ऑफिस है, तुम्हारा पूरा जो मकान है ऑफिस का, वो जल गया है, तुम्हारी पेढ़ी जल रही है। तुरंत उठ गए, तुरंत भागे, कहा कि मेरी पेढ़ी, आज ही लोगों ने पैसे दिए थे, अंदर बहुत सारे हिसाब के कागज पड़े हैं, पूरा सारा का सारा सामान पड़ा हुआ है। लोगों ने रास्ते में पूछा कि सेठ जी, आज इतना घबराए कहाँ जा रहे हो, क्यों, क्या हो गया, हम कुछ मदद कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मत पूछो, अभी मुझे जाने दो। बहुत दौड़ते दौड़ते भाग रहे थे, उसमें से एक परिचित आया और उसने कहा कि भाई क्या सेठ जी, क्या बात है, क्यों भाग रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी ऑफिस जल रही है। कहा कि अरे, आपको किसी ने गलत न्यूज़ दे दिया है, वो आपकी ऑफिस नहीं जल रही है, वो किसी और की ऑफिस, बगल वाले की ऑफिस चल रही है, उसका धुआं केवल आपकी ऑफिस से गुजर रहा था। तो एकदम शांत हो गया, एकदम अंदर से संतोष हो गया कि चलो मैं बच गया, मेरी नहीं थी, किसी और की जल रही है, खुश हो गए। हमारी चेष्टा वैसी ही है, हम यहाँ जो क्रिया कर रहे हैं, जो धर्म कर रहे हैं, वो दूसरे का चाहे जो भी हो, हम बचे हुए ऐसा मान कर चल रहे हैं। शास्त्रकार तो ये भी मना कर रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, दूसरे का भी जल रहा है, आपका भी जल रहा है। लेकिन ये बात सेठ के मन में इतनी लग गई, महाराज जी के पास गए, महाराज जी ने वैराग्य का उपदेश दिया, वो साधु बन गए, सेठ जी साधु बन गए। साधु बन करके साधना करने लगे, शिष्य बनने लगे। तो उन्होंने, शिष्यों ने एक दिन पूछा कि इतना सारा तप क्यों करते हो? तो कि जीवन में एक बहुत बड़ी गलती कर ली थी कि मेरी ऑफिस जल रही थी, ऐसा सुन करके मेरे मन में जो राग था उसके कारण मैं दौड़ा, लेकिन जब पता चला कि किसी और की ऑफिस जल रही है, तब मोह के कारण दूसरे की जल रही है, उसको ऐसा सुन करके मुझे अच्छा लगा था, और उस अच्छा लगा था उसका जो पाप मुझे लगा है, उस पाप को मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। वो अभी छूटा नहीं है, उस मन में अभी भी वो बात लग रही है कि वो अच्छा हुआ था, मैं बच गया। तो ये एक संवर आश्रव हुआ था, उस आश्रव को धोने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी कोशिश की। हमारे जीवन में हम कितने आश्रव करते हैं, लेकिन संवर कभी नहीं करते हैं। तो संवर की बात करते हैं, सम्यक योग निग्रहो गुप्ति, उसके पहले कहते हैं कि आश्रव निरोधो संवर। यह पर्व है, संवर का पर्व है। संवर का पर्व है मतलब इन 10 दिनों में हमारे जीवन के जितने भी द्वार हैं उसको बंद करना है। आप कभी भी एक साथ 2 क्रिया नहीं कर सकते, आटा खाने की और साथ में भौंकने की। एक तरफ से हम अपने मुंह से आटा खाने की चेष्टा कर रहे हैं और दूसरी तरफ से हम भौंकने की भी चेष्टा कर रहे हैं।
दो क्रिया एक साथ कभी भी नहीं हो सकती है। या तो आप आटा काट सकते हैं या तो भोंक सकते हैं। ગુજરાતીમાં જેને કહીએ છીએ કે લોટ ફાંકવું અને ભસવું, આ બે ક્રિયા એક સાથે ક્યારેય થઈ શકતી નથી। हम दोनों क्रिया करना चाहते हैं, इसलिए कहते कि गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना राम, हर जगह गए वैसी चेष्टा करने लगते हैं। संवर का मतलब ये पर्व जो 10 लक्षण पर्व हैं वो संवर का पर्व है। संवर का पर्व मतलब हमारे जितने भी द्वार हैं उसको हमें बंद करने हैं। जहाँ से कर्म का आगमन हो रहा है, जहाँ से हमारे मन में अशुभ विचार आ रहे हैं। कभी भी हमने सोचा नहीं होगा कि कहाँ कहाँ से हमारे मन में, हमारे जीवन में अशुभ विचारों का आगमन आ रहा है। हम कोई स्थूलीभद्र तो है नहीं कि कोशा के घर में रहकर भी हम लोग जल कमलवत रह सके। कोशा के घर गए हैं, कोशा खुश हुई हैं। जब कोशा को छोड़कर गए तब स्थूलीभद्र ने पूछा नहीं था कोशा को कि मैं जा रहा हूं, मैं संयम ले रहा हूं। 12 साल तक कोशा के साथ जीवन बिताने वाले स्थूलीभद्र जब निकले तो सब छोड़ करके निकल गए थे। निकल करके साधु बन गए थे। साधु बन करके पहला चातुर्मास जब कोशा के घर पधारे हैं तो कोशा खुश हुई थी कि देखा ने, मैं भी मान ही रही थी कि साधु तो क्या बने, थोड़े दिन भी मेरे बिना नहीं रह पाओगे। और वही हुआ। ऐसा मान करके कोशा खुश हो रही है। कोशा को अत्यंत आनंद हो रहा है कि आज मेरा प्रियतम वापस लौटा है। अच्छा भोजन बनाने की चेष्टा करती है, उसका स्वागत करने की कोशिश करती है। तब स्थूलीभद्र कहते हैं कि मैं आज आया हूँ और 4 महीना यहाँ रहने वाला हूँ, मैं वापस जाने वाला नहीं हूँ। कोशा को और खुशी हुई है। कोशा ने कहा कि आज तो मेरा मन का जो प्रीतम है वो आज पधारा हुआ है। आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है, खुशी का दिन है। तब स्थूलीभद्र कहते हैं कि मैं यहाँ रहूँगा, लेकिन मेरी एक ही शर्त है, आपको जो खिलाना हो खिला सकते हैं। मेरे नियम के अनुसार उसमें जो भी गरिष्ठ भोजन देना चाहती हो मैं ग्रहण कर लूँगा, लेकिन एक ही नियम है कि आपको मुझे छूना नहीं है, आप मुझे छुओगे नहीं। इसके अलावा और कोई नियम नहीं है। स्थूलीभद्र स्वयं अपनी परीक्षा करने के लिए आए थे, स्वयं यहाँ आकर के साधना करना चाहते थे और कोशा को भी धार्मिक बनाने आए थे। हम ऐसे महापराक्रमी तो है नहीं, हम ऐसे त्यागी भी नहीं हैं कि राग के घर में बैठ कर के विराग की बात करें। कितने लोग हैं हमारे में से कि राग के घर में बैठ कर के विराग की बात करते हैं। हम तो विराग के घर में जा कर के भी राग की बात करते हैं। हम विराग का घर वितराग का घर है। जो वितराग का घर यानी मंदिर है, मंदिर यानी जिनेश्वर के पास जा कर के भी राग ही तो मांगते हैं। हम कहते हैं कि हमारा ये काम सफल हो जाए, हमारा वह काम सफल हो जाए, तो संवर कहाँ से होगा। हम तो हर समय आश्रव के द्वार पर खड़े होकर के मौज मस्ती कर रहे हैं। संवर यानी उस आश्रव के द्वारों को बंद करने की कोशिश चेष्टा भर नहीं करते हैं। उसके लिए तो चाहिए वितरागता के घर में बैठ करके, जितना भी बैठते हो आप, वितराग बनने की कोशिश करो। राग के घर में बैठ करके वितराग नहीं बन सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन वितराग के घर में बैठ करके वितराग तो बनने की कोशिश करें। हम उतना तो अभ्यास करें, वो भी अभ्यास नहीं हो पाता है। आश्रव निरोधो संवरः, महात्माओं ने, महापुरुषों ने 10 लक्षण का विधान बता करके हमारे पर बहुत बड़ा उपकार किया है कि 360 दिन आपके पास है। उस 360 दिन में से केवल 10 दिन संवर के दिन बनाने हैं।
आपने 350 दिन शरीर के लिए बिता दिए, संसार के लिए बिताए, आपने पूरा साल परिवार के लिए बिताया, खुद के लिए बिताया। अब अपने लिए, केवल अपने लिए आत्मा के लिए बिताओ। और आत्मा के लिए जब आप सोचने लगोगे तो कई बातें आपके सामने आएगी, और वही संवर का पहला कदम है, संवर की पहली भूमिका है। स्थूलिभद्र स्वयं महान थे, स्वयं ज्ञानी थे, स्वयं जागृत हो चुके थे, इसलिए कोशा के घर रह करके भी साधना कर पाए और मुक्त हुए। हमारी ऐसी न हिम्मत है, न साहस है, न पराक्रम भी है। हमारा पराक्रम बहुत शिथिल है। सुबह जो बोला आता है 2 मिनट के बाद फोक हो जाता है। 2 मिनट के बाद कोई हमें नम्रता से विनंती करते हैं तो हम हमारा सामर्थ्य भी छोड़ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारा पराक्रम कितना शिथिल है, उसमें बल ही नहीं है, और हम बड़ी बातें कर रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि संवर के प्रति जागृत होने के लिए केवल 10 दिन की साधना करनी है। यह 10 दिन भी निश्चित है, 10 दिन के लिए भी हम तैयार नहीं होते हैं। 10 दिन के लिए भी हम साधना का अवसर आने पर भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं। तो हम खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं और अन्य के लिए यानी पर के लिए समय निकालते हैं, तो कभी हमारा निस्तार नहीं हो पाएगा। संवर समिति गुप्ति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय और चारित्र से होता है। हम संवर की बात कर रहे हैं। इन 10 दिनों में हमें संवर करना है, तो संवर कहाँ से शुरू होता है? तो कहते हैं कि समिति गुप्ति धर्म। धर्म का मतलब है 10 विध धर्म, परिसहजय और चारित्र। परिसह पर विजय प्राप्त करने से, चारित्र से अनुप्रेक्षा भावना। इन 10 दिनों में हमें जो 10 धर्म बताए हैं, उस 10 धर्म के साथ साथ समिति गुप्ति अनुप्रेक्षा परिसहजय और चारित्र, इन सबको जोड़ना है। हम नहीं जोड़ते हैं तो वो सामान्य धर्म बन जाता है, और यदि हम जोड़ देते हैं, शास्त्र हमें ये फरमाता है कि क्षमा तो सब कोई कर सकते हैं। उत्तम क्षमा कब बनती है? उत्तम क्षमा उसके साथ समिति हो, उसके साथ गुप्ति हो, उसके साथ परिसह पर विजय पाने की चेष्टा हो, उसके साथ अनुप्रेक्षा हो और उसके साथ चारित्र हो। इतनी बात हो तब जो धर्म बताए हैं 10 धर्म, वह उत्तम हो बन जाते हैं। 10 धर्म हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। हमने कई बार सुना है, उत्तम क्षमा की बात करते हैं, लेकिन हमारी क्षमा उत्तम इसलिए नहीं बनती है कि हम न तो समिति का पालन करते हैं, न गुप्ति का पालन करते हैं, न हम अनुप्रेक्षा करते हैं, न परिसह का विजय करते हैं, और चारित्र का पालन तो जरा भी नहीं है। इसलिए हमारी क्षमा भी अत्यंत निस्तेज होती है। परमात्मा महावीर ने अनेक अनेक लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक कर दिए थे। उनके दर्शन से अनेक लोग चल पड़े थे। उसका कारण ये उत्तम धर्म थे उनमें। उत्तम धर्म प्राप्त करने की ये पहली बात हमें समझ में लाने की है, वह है कि समिति गुप्ति अनुप्रेक्षा परिसहजय और चारित्र के साथ पहला धर्म, हम आज पहले धर्म की बात करेंगे, और वह पहला धर्म है क्षमा। क्षमा की बात हम कल भी कर चुके थे, कल भी करके आए हैं, आज भी करेंगे कि क्षमा
क्षमा इसलिए आवश्यक है कि हम जब तक अपने जीवन में धर्म का पहला लक्षण, पहले दिन में ये बताया कि क्षमा मतलब इन 360 दिन में हमारे से जो जिन जिन लोगों के साथ हमारी गलतियां हुई हैं, हमने दूसरे को ठेस पहुंचाई है, पीड़ा पहुंचाई है, उन सबको हम क्षमा देना चाहते हैं, क्षमा करना चाहते हैं। और क्षमा का पहला सिद्धांत जो महावीर स्वामी ने दिया है उसकी हम चर्चा करेंगे। उसके पहले सबसे मांगनी है, सबसे, नौकर से भी। इसलिए कल जो क्षमापना का प्रवचन था उसमें ये बताया कि जो क्षमा मांगना वाला है वो छोटे से भी क्षमा मांगेगा, मतलब बच्चे की भी क्षमा मांगेगा। केवल जो हमारे से बड़े हैं या जो जिससे हम दबे हुए हैं उसी की क्षमा मांगनी नहीं है, सबकी क्षमा, जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई है जीव मात्र की क्षमा मांगनी है। क्षमा से शुरू होता है। क्षमा इन 10 दिनों का प्रारंभ, प्रथम धर्म का पहला कदम यहाँ बताया है कि क्षमा, सबके साथ क्षमा। क्षमा आएगी तो उसके बाद में मृदुता, मृदुता जो दूसरा धर्म बताया है उसकी बात, लेकिन आज हम उसकी बात नहीं करेंगे। आज केवल हम क्षमा की बात करेंगे। और क्षमा का अर्थ है हमारे से जो गलती हुई है, जिसके साथ गलती हुई है उसकी हम माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगना और माफ़ करना दो बातें हैं। माफ़ी मांगना, माफ़ कर देना, मतलब जैसे हम गलती करते हैं वैसे दूसरा भी हमारे साथ गलती करता है, हमारे प्रति गलती करता है, तो हम माफ़ी तो मांग लेते हैं, छोटे की भी मांग लेते हैं। यहाँ तो हमारा व्यवहार बन गया है कि बच्चे को कुछ लगा तो पहले, हमारे से कुछ अनजाने में लग गया तो पहले बच्चे को कहता है कि सॉरी बेटा मेरी गलती हो गई, माफ़ी मांग ली। लेकिन जब कोई गलती करता है और जिसमें हमारे साथ उन्होंने गलत व्यवहार किया है और हमारे मन में जो ठेस पहुंची है उसका मलहम हम लगाना नहीं चाहते हैं। हम तो सोचते हैं कि मौका मिले उसका बदला अवश्य लेंगे। और इस बदले की भावना से अंदर के जो पीड़ा है, अंदर जो डैमेज हुआ है उसको हम साफ नहीं कर सकते हैं, उसको स्थिर सुंदर नहीं कर सकते हैं। बोलते हैं हम, खामे में सब्व जीवे सब्वे जीवा खमंतु में मिति में सब्व भूये सुवैर मज्जम न केणई, लेकिन आचार में नहीं है। मिच्छामि दुक्कडम तो हम सबसे कर लेते हैं, लेकिन अंदर जो पीड़ा पड़ी है उस पीड़ा को भी हमें भूलना है, हमें उनको भी साफ कर देना है। हमें ये मान करके साफ करना है कि जो दूसरा है वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे परेशान कर सकता है, लेकिन यदि मेरा अंदर का तत्व शुद्ध होगा तो मुझे कोई फंसा नहीं सकता है, मुझे कोई पीड़ा नहीं दे सकता है, किसी की कोई ताकत नहीं है। इसीलिए ये परंपरा में ये कहा, जब आप शास्त्रों की बात करते हैं, गहनता तक पहुंच जाते हैं, तो कहते हैं कि उपादान यदि आपका शुद्ध है, निर्मल है, तो निमित्त कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। क्या कहते हैं? उपादान तो आत्मा है, निमित्त सारे पर लोग हैं, तो निमित्त उपादान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि हमारा उपादान कितना मजबूत बने, उतनी ऊंचाई पर ले जाना है, और उसकी ऊंचाई तक पहुंचने की शुरुआत होती है क्षमापना से। क्षमापना देने का भाव, क्षमा देने का भाव, माफ़ कर देने का भाव जितना बढ़ेगा उतना अधिक लाभ होगा। तो वहाँ से शुरू होती है अहिंसा। अहिंसा की बात वहाँ से शुरू होती है
पतंजलि कहते कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैर त्याग। यदि आपके मन में अहिंसा के भाव पड़े हैं तो वैर अपने आप नष्ट हो जाता है। हमारे मन में हिंसा के संस्कार पड़े हैं, इसलिए वैर बढ़ता जाता है। और ये वैर या हिंसा दोनों, उनके स्वरूप को हम समझते नहीं हैं। समझ लें तो हम वैर त्याग कर लेंगे। वैर त्याग करना हमारे लिए इतना बड़ी बात नहीं होगी। जब आप तालाब में एक कंकड़ फेंकते हैं तो एक कंकड़ से जो पहला वलय उठता है वह धीरे 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 बड़ा होता जाता है और दूसरे अनेक वलय उठते जाते हैं। अंदर पड़े हुए कषाय वैर के संस्कार, यदि आप उसको क्षमा नहीं सकते हैं, उसको शांत नहीं कर सकते हैं, तो धीरे 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 वो जिस तरह पानी में एक छोटा सा कंकड़ पड़ करके जो वलय पैदा हुए हैं, उस वलय को जब तक आप शांत नहीं करते हैं तब तक बड़े 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 वलय एक दूसरे से टकराते हुए बढ़ते जाते हैं। और उसको शास्त्रकारों ने, दार्शनिकों ने बहुत बड़ी उपमा दी है, बहुत सुंदर उपमा दी है। उसको कहते हैं विवर्त। क्या कहते हैं? विवर्त। विवर्त का मतलब है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, जो वर्तुल बनता जाता है, जो सर्कल बनता जाता है। एक कंकड़ ने जो पहला वर्तुल बनाया था, जो पहला सर्कल बनाया था, उससे उठता हुआ दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा बढ़ता। एक बार एक शराबी बहुत नशे में था और गंदी नाली के पास पड़ा हुआ था। उसका मित्र वहाँ से गुजरा। उसने कहा कि भाई आज यहाँ? तो कहा हाँ, बस यहाँ मस्ती ले रहा हूँ, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है, कितनी मज़ा है। गंदे नाले पर कीचड़ के अंदर पड़ा हुआ है, फिर भी उसको आनंद आ रहा है, फिर भी उसको मज़ा आ रहा है और कहता है कि अरे तू भी बैठने, इसकी मज़ा तो लूट तू। नशे में था इसलिए। उसको उठाया, उसको कहा कि भाई तू कोई होटल में, रेस्टोरेंट में या कोई ऐसी जगह पर नहीं बैठा है, तू तो एक नाली, गंदी नाली के पास पड़ा हुआ है। थोड़ा होश में आया। तब इसके मित्र ने कहा कि तुम क्या कर रहा था? इतना ज़्यादा नशा भी मत करो। आज कितना पैग लिया था? तो कहा कि पैग तो एक ही ली थी। पहली गई, उसने दूसरी को आमंत्रण दिया, दूसरी ने तीसरी को आमंत्रण दिया, तीसरी ने चौथी को आमंत्रण दिया, चौथी ने पांचवी को आमंत्रण दिया। ऐसे बढ़ते बढ़ते करीब 8-10 पी ली होगी। कषाय जब उत्पन्न होता है, यदि उस पर हम, कषाय को भी शराब की उपमा दी हुई है। शास्त्रकारों ने कहा है मज्जम व मोहनीयम, यानी मदिरा है, जो मोहनीय कर्म है, मदिरा है। वह यदि उठ गई तो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, और गंदी नाली यानी हमारा मन उसी कीड़े पर, इसी दुर्गुण लोगों के दोषों देखने में, लोगों की निंदा करने में, लोगों को हराने, परेशान करने में ही हमारा मन लगा रहेगा। और उसको हम कहेंगे कि मेरे जैसा होशियार कोई नहीं है, मैंने कितना बड़ा काम कर लिया, देखो। उसको भी दिखा दिया, मुझे एक बात कह दी, मैंने 10 सुना दी। ये क्षमा का भाव नहीं है, ये तो अक्षमा की परम चरम कोटि है। उस अक्षमा की परम चरम कोटि से नीचे उतर करके हमें आगे बढ़ना है। और उस आगे बढ़ने के लिए चाहिए अंदर से क्षमा के भाव। हर रोज इन 10 दिनों में एक अभ्यास करना है। सुबह उठ करके और रात को सोते वक्त 5 मिनट, 10 मिनट सभी को क्षमापना याद कर करके, किसी व्यक्ति के पास नहीं जाना है अभी तुरंत, लेकिन याद कर करके कि इन दिनों में, पिछले साल में और पिछले वर्षों में मेरे साथ किसके साथ विवाद हुआ है, किसने मुझे क्या कहा, मैंने उसको क्या कहा, क्या नहीं कहा।
शास्त्र में उसको जीतने के लिए, क्षमा को प्राप्त करने के लिए बहुत उपाय दिए हैं, लेकिन जब स्वयंभव सूरी अपने छोटे शिष्य को उपदेश देते हैं तब यही बात कहते हैं कि देखो, मनुष्य जीवन सफल करना है तो याद करो कि किसके साथ क्या झगड़े हुए थे, क्या नहीं हुआ था, और जिसके साथ हुआ है, विवाद हुआ है, कुछ भी हुआ है, उसको याद कर करके उसके साथ क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करते जाओ, और ऐसे 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 आत्मा मन हमारा निर्मल होता जाएगा। यह है शुद्ध पवित्र होने की प्रक्रिया। छोटी सी प्रक्रिया है, लेकिन याद करते 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 सबको याद करके, और जब कुछ भी बचा न रहे तब ये बात याद करो कि जगत के सभी जीवों को मैं क्षमा देता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा दें, सभी के साथ मेरा मैत्री भाव है, मेरा किसी के साथ वैर विरोध नहीं है, और मेरी आत्मा जो उपयोग लक्षण है, उस उपयोग लक्षण पर हैं, सभी से पर हैं, और पर किसी का भी बिगाड़ नहीं सकता है, और जब कोई किसी का बिगाड़ नहीं सकता है तो मेरी आत्मा का भी कोई बिगाड़ नहीं सकता है। तो मैं क्षमा को क्यों छोड़ूं? और परमात्मा महावीर, हाँ पूરું करूँ છું मैं, परमात्मा महावीर कभी भी कितने भी प्रसंग आ गए, कितने प्रसंग आए, गोशालक ने तेजोलेश्या छोड़ी, कितना बड़ा उपसर्ग था, कितना बड़ा। तेजोलेश्या का मतलब है जला देने जैसी तीव्र ज्वालाएं उसने निकाली थी। परमात्मा उस समय भी समता में स्थिर रहे और संभाव में स्थिर रह करके हमें भी ये बात बताई कि आप उसको स्वीकार नहीं करते हैं तो वो आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती हैं, और जब प्रवेश नहीं कर सकते हैं कोई भी चीज़ तो अपने आप छूट जाती हैं। तो प्राप्त करने क्षमा की प्राप्ति होती है अहिंसा से, अहिंसा से वैर का त्याग होता है, वैर का त्याग होता है मैत्री से। अहिंसा और मैत्री, उसका बहुत बड़ा सूक्ष्म चिंतन हम लोग कर चुके हैं, उसको हम यहाँ रिपीट नहीं करेंगे। हम आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं। ये कुछ अंश आपको सुनाए, उस अंशों को आप याद रखोगे और आने वाले 10 दिनों में, एक दिन बीत चुका है, 9 दिनों में यदि आप कुछ करते जाओगे तो यह पर्युषण यानी 10 लक्षण हमारे लिए दिव्य बन जाएंगे। अस्तु। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।